الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. I will not take much time for the introduction of this seminar. I would like to state only 2 points. The first point is please keep silence during the seminar so that you guys could pay attention to our esteemed guests who have taken out time from their busy schedules. And the second thing which I would like to tell you regarding the seminar is that what is the purpose why we are sitting here. The only purpose for sitting here is Allah has made this mandatory for all of us to spend our 24 hours of our daily life according to the guidance which Allah and His Messenger has provided. So we as a student and as a faculty spend a lot of time in our university. So how we should be spending our time according to our religion and what should we be doing in our university and what should we not be doing in our university. So this this seminar will going to help you in understanding that. I will shortly introduce the 2 speakers who are sitting with us. The first one is Maulana Khizr, who has basically graduated from LUMS. He has done bachelor's in computer sciences from LUMS, and then he has done Alim course as well. So he will be speaking on misdirected love first. And I would like everybody to note down their questions, which you guys can ask after his speech. And our second speaker is Jawad Saab, who is also a graduate of LUMS. And I would leave the introduction to themselves so that they can introduce themselves at the start of the speech. So I would like you guys to pay attention to what they are speaking, and you guys should not use mobile phones, or you should not discuss anything with each other. All right. Thank you. So I would like to invite Maulana Khizr Saab first. अस्सलामुअलैकुम, आवाज आ रही है पीछे? नेक्स्ट स्लाइड ठीक है, आप मुझे माउस Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to begin inshallah. We are going to slightly change the format of the session. जब मैं नीचे बैठा था ना, मैंने इनकी बात सुनी, मैंने सोचा कि चले, we are going to do the questions at the end, but we are going to, if there are any questions, you can ask me in the middle. I think that is going to be most interactive. कोई सवाल बीच में आएगा तो आपने हाथ उठा के पूछ लेना, मैंने उस टाइम जवाब देना है. उससे होगा ये कि I will be able to understand whether you are understanding what I am saying, and also I will be able to understand how to take the conversation ahead from this point. We are going to have a somewhat informal discussion. I made the slides yet again when I was sitting here. I decided I'm going to go through the slides, but inshallah we are going to make it a little bit more informal. First and foremost, तारुफ मेरा कराने का Dr. Abdullah साहब ने बोला है, it is a very difficult thing, but nonetheless, my name is Khizr. I have done my schooling from Karachi. Basically, I was born here. My primary education was from the CAS school here in Karachi. My O levels. For A levels, I went to this college called the South Shore School. I don't think it exists anymore. Then I went to LUMS for my undergrad program in 2006. In 2009, in 2009,
I started my Dars-e-Nizami Alim program while at LUMS part-time. In the mornings, we used to do the program. 2010, I got done with LUMS, and then I stayed full-time in Lahore to complete the program, to continue the program. 2014, 2015, I migrated. I shifted back to Karachi, to where my parents were. And Alhamdulillah, I managed to finish the program, the Dars-e-Nizami Alim course here. During the time, I also did some diploma courses, one from Warwick University, one from Oxford in the UK, to continue my this education pursuit. That is my basic Bunyadi Taruf. There is an institute by the name of Hikmah Institute that I have co-founded, and we currently run. We offer short courses for men in the evenings, basically for students and those who are working professionals. And there's an alternate institute, a sister concern by the name of Aliman Institute, which offers similar courses for women. Inshallah, the details can be shared later. Coming straight to the topic, I'm going to start with the slides, inshallah, moving onwards. The topic that has been assigned to me is misdirected love. I've done this topic once before. I'm going to try and understand and cater to two questions in this session. दो बहुत बुनियादी basic सवालों के जवाब tackle करने की कोशिश करेंगे. First and foremost, what is love? And secondly, is love halal or haram? I'm going to open the floor to your comments now. आपका क्या ख्याल है? Is love halal or haram? Okay. इसको एंड में टैकल करेंगे. I'm just looking for a yes or no question. Is love halal? Is love haram? Absolutely not. Huh? चलें. Yes. You've gotten the poll correctly. Basically, love is both halal and haram. I'll tell you that, right? There is one basic answer to this question, and that is the correct form of love, the pure form of love, is only going to be haram. इससे एक चीज तो हमने establish कर ली, that the love I'm going to be talking about today is not the love for Allah or Rasul, right? Given the way I appear, you'll probably be assuming कि मौलवी साहब ये बात करेंगे. So let us be very clear over there, right? The love I'm going to be talking about is the love you have come here to listen to, and what I'm going to be speaking about, inshallah. As we grow old, when a child turns from the age of 6 to 16 and from 16 to 26, there are certain changes that goes on, right? The first thing that happens is the child goes through social changes, psychological changes, physical changes, physiological changes, and that is the part of growing up. Now, as we grow up, there comes a point when we start interacting with the opposite gender. The girls interact with the boys interact with the girls. And as this interaction grows, there is something we establish, and that is an emotional connection with the other person, right? Excessive interaction then can lead you to infatuation or relationships. For the purpose of our topic today, we are going to be calling that misdirected love, right? Now, Dictionary.com defines infatuation as foolish or extravagant passion, right? There is a big difference between the two, right? Normally when we feel this, we often confuse it in our younger years as love, right? मेरी 7 साल की बेटी है, right? When her cousin brothers friends come over, normally वो 6-7 साल की बच्ची है, वो कोशिश करती है कि वो नीचे झूलों पे खेल रहे होते हैं, वो झूलों पे जाके उनके साथ खेलने की कोशिश करती है. और जब उसके दोस्त आए हुए होते हैं, उसके कजिन के दोस्त आए हुए होते हैं, तो वो कोशिश करती है कि she dresses up well, she goes, talks to them, interacts with them, be friends with them, wants to be close to them. That is how she is, and she's 7. If tomorrow she comes and tells me, Baba, I am in love with this boy, right? Baba, I am serious about him. Baba, I see a future with this boy. What do you think I'm going to respond? क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? हरा है बोलूँगा तबीयत ठीक है? Are you okay? Right? Most probably I'm going to ignore it. If you have a sister or a brother who does the same thing, 6-7 साल तक, you're going to say the same thing, right? It is the exact same thing when you're 6. It is the exact same thing when you're 16, and it is the exact same thing when you're 26 also, right? The problem is that this concept, idea, notion of love that we've been fed or misfed in our society because of the Western culture and the social media, we have started to confuse this idea and concept of infatuation or emotional connection as love, right?
we have started to confuse this idea of emotional connection as love. There's a big difference between love and emotional connection, and there is no harm in having an emotional connection, right? There are things we have emotional connection with throughout our lives. As we grow up, we develop emotional connection with objects more than people, right? But when a person comes around, right, we develop an emotional connection with that person and we start calling it love. There's a big difference. Today's session, I'm going to try and dismantle this concept and idea of infatuation, relationships, and actual love. Don't worry, आखिर तक मैं actual love के ऊपर आऊँगा, but prior to that, I'm going to close and end this concept of infatuation, right? Many years ago, when we were preparing the seminar workshop, we did a survey, right? We took a poll and we went out and we asked a lot of men and women exactly what they tell themselves, right? अपने आप से क्या कुछ बोलते हैं when they are involved with the other person and trying to justify that. So we started calling that the lies we tell ourselves. There are many justifications we give ourselves when we are connected to the other person, right? First and foremost, what do we say? We are just friends. Dost hai, kya tension, right? Secondly, she's like my sister or he's like my brother. इसका तफसीली जवाब दूंगा आपको तक में इंशाल्लाह. The third is we are not infatuated. So what? We are just friends, right? आपको क्या problem है इससे? ये होता है ना, आपको क्या problem है इससे? And the fourth thing is normally we are not in a relationship. We are going to let you know when we are, right? So first and foremost, we are going to tell you a litmus test, right? To determine and understand if you are actually in a relationship, or if you are actually infatuated, or if you are actually, if you are actually infatuated, or if you have actually fallen into the trap. First and foremost, assuming you are claiming that you are just friends, let us see if either of the things we go through. आवाज आ रही? First and foremost, when you see her or him talking to someone else, you feel jealous. You feel a pinch, you have a problem over there. Secondly, if you want to take notes from someone in the college, university, school in your class, the first person that comes to your mind is that very good friend or contact, right? The third thing is when a text comes from him or her, you spend quite a bit of time. एक तो you read it 10 times over, 10 बार पढ़ते हैं और उसके बाद 10 मिनट तक सोचते हैं कि जवाब क्या दें, right? And for him or her, you can spend your money, time, effort, even you can leave your old existing friends for that person. Trust me, if one of these things or all of these things are happening, then you have fallen into the trap. I'm just going to start calling it a trap right now, right? You have fallen in the trap and there is something that needs to be done, right? More lies we tell ourselves. और क्या हम अपने आप को झूठ बोलते हैं? First scenario, let's draw a couple of scenarios now, right? दो scenarios draw करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम आपको समझाते हैं normally होता क्या है, right? First and foremost, the person tells, okay, I agree, we have feelings for each other. What's wrong in this? Now there are two people, of course. There needs to be two people. दो लोग होना जरूरी. Let's just give them names. They belong to college, university. Let's just call it, PFE, CBM, IBM, whatever you want to call it. दो लोग उधर मौजूद हैं. एक हैं सलीम और दूसरे हैं परवीन. थोड़े ट्रेडिशनल जाते हैं ना. Let's just call them Salim and Parveen, right? What happens in the trap? First and foremost, there are two people. Of course, college, university, there's an assignment they need to work on. Normally होता है ना, एक assignment हो जाता है. They both are paired together by the instructor, by the teacher, not out of their own free will, to work together. एक साथ काम करने का उनको मौका मिला और जरूरत पड़ी. They start working on an assignment and the assignment finishes. This is okay. College, university में ऐसा होता है. If this is all that happens, then it is okay. Normally, given the rules of interaction are followed. I'm going to come to the rules in a little while. But normally, what happens when the assignment finishes, na 2 या 3 महीने बाद, Salim and Parveen, they decided to exchange numbers. At times, they exchange numbers. At times, there is WhatsApp, there is Facebook, there is Insta, there is Twitter,
there are 200 more, I don't know क्या बोलते हैं इसको, social media की balas that are existent right now. Even if Parveen wants to hide, she ends up getting discovered because mashallah google.com is very advanced nowadays. So what happens, they connect at a level other than the level that was there in the school. They are free to talk to each other beyond the confines of the school, college, university, beyond the confines of the classroom or the assignment, right? Normally when this happens, उसके बाद होता क्या है, there is an exchange of communication that starts happening. शुरू में होता है हेलो क्या हाल चाल है, सलीम भाई ठीक है, प्रवीण बाजी ठीक है, सब खुश हैं, राइट, you're okay, let us just be friends, right? फिर क्या होता है, सबसे पहले I'll tell you to keep it halal, हदीस और बयान गोस, राइट, व्हाट्सएप पे इधर से उधर जाता है, फिर उधर से इधर आता है, नेक बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, एंड देन it becomes more and more informal over a period of time, right? Basically what happens is Parveen starts giving more time to Salim and Salim starts giving more time to Parveen. जहाँ परवीन को पहले प्रेफरेंस होती थी वालिदैन, दोस्त, भाई, रिश्तेदार, स्टडीज, राइट, उसकी प्रेफरेंस में सबसे टॉप प्रेफरेंस बन जाती है सलीम, एंड इट्स द सेम फॉर सलीम आल्सो, राइट. द प्रेफरेंस चेंजेस, द प्रायोरिटीज चेंजेस, द rule regarding what is right and what is wrong changes. Anything that my friend tells me, that is okay. Anything that my friend does not tell me is not okay, right? So we start giving more time and attention. What does that make us do? That there's a cost for that, right? And that eventually leads us to lack of concentration, first and foremost. जहाँ पहले हमारा कैलकुलस पे तवज्जो होती थी, अब हमारी दूसरे पे तवज्जो, राइट. जहाँ हमारा पहले पाक स्टडीज पे तवज्जो होती थी, दूसरी जगह तवज्जो होती है. We start lacking in studies to start off, and of course we start lacking in respect for our family members because this person starts to take the topmost priority in our lives, and he's just a friend at the moment, right? Of course there's sin happening, there's bebarkati happening, that is there in essence at the in the total conversation, total discussion. Then eventually what happens is Salim and Parveen decide to confess their love for each other. होता क्या है कि वो एक दूसरे से क्या बोलते हैं, they make it official. The Facebook status goes from single to in a relationship. That is what happens ना. Facebook status बदलते हैं थोड़े अरसे बाद, right? So what happens? They enter into a relationship. Now there are three outcomes that can happen from this point onwards. तीन चीजें हो सकती हैं, right? We are going to tackle two of them over here, and we are going to tackle the third one of them over here, and then we are going to tackle the third one later, right? पहले तो Facebook status in a relationship हो जाता है, उसके बाद Parveen and Salim have some issues, right? Given you are in a college university environment, there are other girls and boys in the college university environment which Salim and Parveen are interacting with, right? And of course Salim has his life. Salim lives in his own house. They don't live together. They're not married. They're not living in the same house. So of course they're not their topmost immediate priority because Salim ने भी घर जाके अपने माँ बाप के साथ काम करना रहना होता है, सब कुछ करना होता है. College university में अगली there are other girls also. Then eventually what happens is क्या होता है, why don't you give me time, why don't you give me attention, why do you talk to her, why do you talk to him, ये होता है ना, right? This happens. उससे क्यों बात कर रहे हो, उसको इतनी attention क्यों दे रहे हो, उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, ये होना शुरू हो जाता है. तो the relationship at that point goes from in a relationship to it's complicated, right? हो जाता है. And eventually what happens is I hate you, I don't want to talk to you, I don't see your face, go away, ये होता है ना, and it goes back to single and ready to mingle, right? Single and ready to mingle. I'll tell you what happens over here. First and foremost, realize and understand when this happens that it takes an emotional impact on a person. And I will clear this point. This is a very important point. Realize and understand. जिस चीज पे वक्त, तवज्जो, टाइम, खून पसीना लगेगा ना, उस चीज की मोहब्बत, इज्जत और अदब दिल में आएगा, right? समझ आई मेरी बात? जिस चीज पे टाइम, तवज्जो, वक्त लगेगा, एफर्ट लगेगा, माल पैसा लगेगा, खून पसीना लगेगा, you will always have an emotional connection to that thing, right? I have a friend, उसकी जूतों की कलेक्शन, वो क्रेजी है जूतों के बारे में. उसने जिंदगी के अपने सारे पैसा जो है ना जूतों पे लगा दिया, तो इज क्रेजी अबाउट इट. स्नीकर फ्री है वो. उसके जूते पे अगर कहीं से कीचड़ लग जाती है ना, तो लिटरली वो रोता है, आंखों से, आंसुओं से रोता है, राइट? हमारे एक और दोस्त हैं, वो गाड़ियों के बारे में इतने दीवाने, राइट? फॉर women it's a separate thing. Because there is so much time and attention, effort and money, sweat and blood that has gone into sneaker or cars, people are crazy about it, right? If you spend so much time, effort, money, sweat and blood on a person which is of the opposite gender, you will be emotionally connected to that person, right? There's a big difference between that connection
and actual love. I think we're going to come to love in a little while, you'll see. But there is a big difference between that emotional connection and love. And once that emotional connection breaks, just like we are all depressed, जब हमारी गाड़ी का accident होता है, at least I am extremely depressed after that, right? So when my car breaks, I am actually angry, depressed, frustrated. That depression, anxiety, stress, frustration is there when that emotional connection breaks, right? When the ability to speak to the other person freely at any time finishes off, there is an emotional turmoil that happens. There is depression, stress, and anxiety that happens. There is anger and frustration that happens. Yet again, it has nothing to do with love. It has more to do with the infatuation we had already developed, right? Infatuation we had already developed, right? This is how the breakup normally happens. Now we are going to come to the second scenario. What happens? Scenario 2. Let's name both of them Salim and Parveen again. But I'm serious about him and her. We have sincere intentions. We want to get married in the future. MashaAllah. They're serious about it, about each other. ये तो समझ आ गया. हम इनकी शादी करा के देखते हैं होता क्या. Right? There is a way to get married. I'll tell you that. And there are multiple ways to get to that point where marriage happens. There are certain which are okay and acceptable, and there are certain which are not okay and acceptable. Right? We are going to take this scenario yet again. I'm serious about it and her. We have sincere intentions. We want to get married. I'm really genuinely in love with him, right? Because I spent two days with him, or 2 weeks with him, or 2 months with him. That is why I'm serious about it. Right? The flow of events happens in the same way, right? The professor patches up both the kids for assignment together. Assignment पे काम करते हैं, assignment खत्म हो जाता है. They become friends and into a relationship, right? And then what happens? Salim decides that I am going to take it to the next level, right? I'm going to go and talk to my dad, right? 25-26 साल के Salim भाई, let's just call them 25. Let's call it 23, right? 22, 23 के भाई Salim, and he goes to his dad first and says, Baba, I am serious about Parveen and I want to marry Parveen. First and foremost, realize and understand that historically speaking, at the age of 23, a man was financially independent enough to get married. अगर आप और हम जाएंगे ना वाले साहब के साथ 23 साल की उम्र में, तो हमारे वाले साहब एक जवाब देंगे पहले कि भाई तू 11 बजे से पहले तो हो जा, सैटरडे वाले दिन फिर बात करनी. तुमसे अपनी गाड़ी का ऑयल तो चेंज नहीं होता, तुम परवीन को क्या चलाओगे? You're not making 22,000 rupees a month. How are you going to run a family? That is the reality, right? At the age of 23, 24, when you're going to your dad, you're meant to actually be independent enough to handle a family at that point, right? If you are 110% dependent on your dad to give you pocket money, how are you going to finance a wife, let alone take responsibility of a wife? You're not emotionally mature enough. You're not financially mature enough. You're not psychologically mature enough. Your biggest obsession in life is watching cricket or football, while the obsessions in life need to change at the age of 20 to 20. We're going to do a separate session in the future sometime regarding this. ये हमारे दिल का बड़ा जबरदस्त दर्द है. The inherent lack of maturity in our youth today. ये हमें समझ नहीं आता, in all honesty. How a 23-year-old boy acts like a 17-year-old person. It's beyond me, in all honesty. But either way, what happens? The dad, he goes and asks dad, and let's assume today is his lucky day, and dad says, okay, मैं परवीन से शादी करा देता हूँ तुम्हारी. तो फिर क्या होता है? परवीन से उसकी शादी हो जाती है, कबूल है हो जाता है. उसके बाद परवीन उसके घर आ जाती है. Right? Now I'll tell you what is inherently wrong over here. Since you have gotten to the marriage phase through a long stream of sin, right? While Parveen was not married to you, Parveen was that woman who you were hiding from your family for the longest time. When Parveen becomes your family, Parveen will always have this trust issue कि भाई जब मैं family नहीं थी, इसने family के बाहर मुझे छुपा के रखा. There could be another Nazish or Zulaikha, whatever you want to call it, right? There could be another Nazish or Zulaikha. He's hiding from me since I'm family. There is very little trust when the relationship or marriage happens through this stream. I will tell you that, right? And there is no barakat either. I'll tell you, because it has been done by committing a lot of sin. It has been done by committing a lot of sin. And the next thing is, of course, the dad refuses and says, "Hey, bhai, koi sin hi nahi." Right? Then exactly the same thing happens, because you invested so much time, effort, and money, right? Your energy on Parveen already, or Parveen has invested on Salim already. The depression and anxiety and stress and anger and frustration, everything is there.
right? That all happens, right? So one thing I'm going to establish over here, and I'm going to openly tell you this, and I'm going to make an absolute statement that relationships do not lead you to a lifelong happy marriage. Or let us just rephrase that: the amount of happiness you can get in a marriage, if it is done in the right way, can never match that happiness, or the happiness you receive when you do it the right way can never be the same when you do it the wrong way, right? Agar aap mujhe aage ye argument pesh karenge, because I did this session earlier, and someone came and told me, yeah, I went through this process and I'm still very happy. I'm married 8 years or 9 years or 10 years, and I'm still very khush, and I went through the wrong route despite that, right? So I need to tell them very openly, okay, had you done it the right way, your happiness level would have been different, right? And this is just me talking to many couples and counseling many married couples where I've come across this, right? I do that. Oh, many people come to me and ask me, and I realized and understood after counseling more than 200, 300 couples that this system where you go through a sin to get married, there is always problem there. There could be Facebook Insta posts where they're as happy as I don't know Leila and Majnu, I don't know, right? Facebook, Insta, you may be the most happiest people. They may be the most happiest people, but in reality, things are very different, right? In reality, things are very different. So, any relationship that happens through the incorrect way, any marriage that happens through the incorrect way, there are inherent issues in that. Trust never happens, right? If it falls apart, it falls apart after 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, or 20 years. It does, right? More often than not. So relationships do not lead you to a happy marriage. And why is that? First and foremost, realize and understand. Realize and understand इस जगह पे जब they entered into a relationship ना, they entered into the relationship. उस टाइम सलीम को सिर्फ परवीन और परवीन को सिर्फ सलीम नजर आ रहा था, right? The one person who Parveen was most close to or most emotionally dependent on was Salim, and the one person that Salim was most emotionally dependent on, who was very easy to respond, was Parveen, right? So इस point पे सलीम को सिर्फ परवीन और परवीन को सिर्फ सलीम नजर आ रहा था, ना परवीन की सोशल स्टैंडिंग नजर आ रही थी, ना सलीम का सोशल स्टेटस नजर आ रहा था, ना फैमिली बैकग्राउंड नजर आ रहा था, ना फैमिली कंपैटिबिलिटी नजर आ रही थी, ना अपनी कंपैटिबिलिटी लॉन्ग टर्म में नजर आ रही थी, ना ही social standing, financial standing, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. There was nothing that was visible to the one person regarding the other than the fact कि यार ये एक बंदा है जो मुझसे अच्छी तरह बात करता है, या ये एक बंदी है जो मुझसे अच्छी तरह बात करती है. सिर्फ एक ये चीज नजर आ रही थी. So inherently, this is the first and primary reason why marriage does not lead you to a happy marriage, because it's not an emotional decision, right? Marriage is meant to be a very balanced, thought out, researched decision where relationships do not play a very important role. Secondly, you make right decisions when selecting your spouse through a relationship. You make decision at an early age. Our religion has been constructed on the grounds of human biology, cognition, and needs. Right? Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ki hadith mubarak hai, where Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says, a person chooses his life partner due to 4 reasons. Right? एक मर्द जो है एक शादी के लिए औरत को, या एक औरत जो है शादी के लिए मर्द को, चाहे मर्द के घर वाले, they choose the right partner due to 4 reasons generally. First is prime, second is money, fourth is beauty, and fifth is taqwa, right? माशरे में मकाम हैसियत, दूसरा है माल पैसा, financial standing, third is beauty, the looks, and the fourth is taqwa, right? ये 4 वजूहात की बुनियाद पर नॉर्मली एक लाइफ पार्टनर सेलेक्ट किया जाता है, right? Now we took this survey out to people also, right? हमने लोगों से जाके पूछा, बॉयज से जाके पूछा कि आप गर्ल्स में क्या चीज तलाश करते हैं व्हेन सिलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर. तो बॉयज बड़े सिंपल, जिससे पूछा ना एक ही सवाल का जवाब दिया उन्होंने, क्या? नंबर 3, she should be extremely good looking, and this is something which is very prevalent in our society anymore. If you go to अभी whenever I open Sunday का dawn आता है ना, उसका advertising section, there is a matrimonial section over there. If you go to a section called looking for a bride, the first criteria throughout where you will find that is going to be she should be good looking. Right? She should be good looking. She should be handsome. This is a phenomenally
बदतमीज approach we have. We reduce a woman to how she looks, how she appears, how her facial features are. Right? This is mind-blowingly shallow. Looks will eventually fade. May it be a man or woman. It is the character that remains and leads to a happy marriage. Right? It's the character that remains and leads to a happy marriage. And then we ask the same question to the women. आपके 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 लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए या प्राइमरी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर marriage? What do you think should be the voice sifat or characteristics? Women have a lot of answers. First, he should be tall, he should be dark, should be handsome, should have a lot of money, right? And there was one additional criteria. उसकी मां नहीं होनी चाहिए. She should not have a mother. He should not have a mother. बाकी आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता. Right? What does Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam say? He says the second part, the first part, which the person chooses life partner due to four reasons. One is rank, second is money, third is beauty, fourth is taqwa. Second part of the Hadith Mubarakah is one should choose who is the best in taqwa. हमें उसको choose करना चाहिए who is the best in taqwa. Now I'll give you a basic understanding idea concept of taqwa. हम जो है ना, we are under the misconception that taqwa relates to being excessively religious in our amal, right? हम अगर किसी को बताते हैं ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़की को क्या मुत्तकी होना चाहिए, तो उनके दिमाग में एक तस्वीर खिंचती है कि भाईजान जो है उनकी दाढ़ी लंबी सी होगी, सफेद मामा होगा, हाथ में तस्बीह होगी, रात में तहज्जुद पढ़ते होंगे, बस ये मुत्तकी इंसान. फॉर वुमेन हिजाबी नकाबी होंगी, पांच वक्त की नमाजी होंगी, दिन भर कुरान पाक की तिलावत करती होंगी. Realize and understand taqwa here in generally also means how Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was in this circumstances. How he was as a husband to the azwaj, right? Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was a mind-blowingly loving person to the kids. He was extremely good-looking. He was very caring. He was very women-centered, right? He was very good to the wives. He was very much responsible when it came to ghar ke umur. He was very attentive to the women. He was very loyal to his wives. Right? So given all these characteristics belong to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, it is going to be an taqwa, primary taqwa for a man if he chooses a wife, or for a woman if he chooses a husband, to look for these criteria and conditions, right? But and after that, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, this hadith implies, after that you want to keep anything else other than the taqwa as the criteria, that is fine. But your primary criteria needs to be taqwa. After that, beauty, looks, honor, whatever you want to put it, that is fine, and there is no harm in that, right? Now, since this Hadith Mubarakah says that taqwa should be the primary criteria, how many of you or how many of us can claim that we've been seeing someone for 2 years, we've been seeing someone for 1 year, we've been in a relationship with someone for 1 year, and we assure that that person has a lot of taqwa? Just by virtue of being in a relationship for 10 minutes, let alone 10 months, there is taqwa which has gone out of the window, right? Taqwa has gone out of the window. So if you want to do amal on this Hadith Mubarakah, right? If you want to hold the words of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam as the primary benchmark and judge and words that define our lives, then we need to actually decide based on taqwa more than anything else. Relationships do not lead you to are you happy marriage. Are you finding the right spouse? Dating will only help you know the person, unless dating will not help you know the person unless you marry her. Physiologically speaking, you guys will try to make impressions on each other and try to show the best. This is what happens when you're not living with each other, right? The boy tries to become the best person when he's with the girl, and the girl tries to become the best person when he's with him. Once the marriage happens, that facade, that mirage that breaks, right? It happens with every family. जिस तरह एक शख्स अपने घर पे अपनी बेगम के साथ होता है, वो बाहर ऐसा नहीं होता, right? जैसा एक शख्स अपने घर पे होता है वैसा बाहर नहीं होता. That is the reality, because at home you can't act. Your life cannot be a play your act while you're out and about in college, university. You can become the best person. You can read amazing novels and wish you were that person and portray yourself to be that person, but the reality always remains different, right? So this person that Parveen has fallen in love with, that person is very different from actually how that person is in reality, and that Parveen finds out when she gets married to him, right?
घर पे पता चलता है कितनी बड़ी चीज है. Trying it is okay. There is a longitudinal study that happened in 1997 that concluded the more months of exposure to cohabitation that young people experience, the less enthusiastic they were towards marriage and childbearing. The more time two people spend right in a relationship, and this is not a Desi Islamic Muslim study. This is a Western study which says the more time two people spend in a relationship or cohabitating or being close to each other, being emotionally connected, the less enthusiastic they are about marriage and about getting married. Right? So marriage is something which is very sacred. If that is delayed because of being in a relationship, then there is an inherent problem in having a relationship. Right? So what are halal relationships? We are going to come to the question. Go ahead, आपका सवाल. I can't. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. How to measure the taqwa? Such taqwa, because we can keep it right. ऐसा भी नजर आ जाएगा. तक़वा के मैं आपको छोटा सा बताता हूँ. तक़वा उस शख्स को नजर आता है जिसके अंदर तक़वा होता है. I'll tell you something very openly. A person who has taqwa, this does not उसका कतन ये मतलब नहीं है मैं कहूँ कि आप खुद जज करें. But if you know someone who is muttaqi, who has taqwa in them, and you know them, right? He could be a friend, he could be a acquaintance, he could belong to another religious institute. You can engage him. Tell him इससे मिल लो, इस लड़के से मिल लो, मुझे बताओ what you think. उससे 6-8 सवाल पूछे जाएंगे. Right? मेरे पास this happens with me है टाइम. मुझे नहीं बुलाएगा, but I'm just telling you this happens with me. When rishtas come, at times the girl's father calls me up. उससे मिलो, इसको देख रहे हो, मुझे बता दो तो मैं क्या लगता है. Right? It's very easy to judge a person's taqwa when you personally interact with that person, right? I'm going to come to you. The reason is you are able to understand it. इंसान का किरदार परखना बहुत आसान होता है, right? अगर किरदार परखना आता हो, it's all about judging the character of the person. जी आपका सवाल था. मेरे ख्याल में जो आपने राइट फॉर अदर की बात की है, आजकल के समय में देखा है कि उसके अंदर बड़ा धोखा खा जाता है, लेकिन तक़वा में धोखा खाना मुश्किल है. थोड़ी सी अगर लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी ना, कि आपने 2 महीने का काम, वो भी बंदे के अंदर कैसे टूल्स है इसमें बात करना उसको आता होगा, और तक़वा को बहुत इजी टेस्ट कर देगा. लेकिन ये जो राइट फॉर अदर चीज़ है, इसमें मार खा जाता है. अभी भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. 200% आपसे और ये वो सारी चीजें होंगी उसको धोखा ये कर मेरा था ये तो नॉर्मली हमारे धोखा खा जाएगा. लेकिन तक़वा में हमारे माशरे में सही में फ्रेंडली क्राइटेरिया जो है ना, माल पैसा रखा राइट. क्योंकि माल पैसा रखा मैंने. एक सेकंड, आई एम गोइंग टू टेक मोर क्वेश्चंस एट द एंड नाउ. ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये 1-2 साइडें ये हम समेट लें. इंशाल्लाह बहुत से सवाल हो सकते हैं, इनमें टैकल हो जाए. Right, inshallah. What are halal relationships? Let's just get back to that. In which it is lawful, halal relationship होती है, in which it is lawful for you to be in the company alone, in their company alone, and have physical contact with them, because either first and foremost they are your lawfully wedded husband or wife, and secondly because they are from your haramat, because they are halal for you. उसकी सारी डिटेल्स सूरह निसा में आएंगी. एक मर्द के लिए कौन सी ख़वातीन है जो हलाल है, जायज़ है for him to be alone with them, for a woman to be alone with their relatives, their khala, beti. In second question, I'm going to try and tackle over here. You have to set the right benchmark. There are benchmarks. When we study Western studies, there's always a benchmark they set in order to build a case. And we're going to set a benchmark over here also. And the benchmark, when it comes to halal relationships, are only and only one thing, and those are the sayings of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Right? By the end of the session, shuru se ab tak mein, we are going to try and logically, critically, academically analyze everything and prove everything and explain everything. But at the end of the day, the benchmark remains the words of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, as per our understanding and with our logical understanding of those as much as we can. Right? More lies we tell ourselves. First and foremost, my love is pure.
भाई इसका जवाब ये है, अगर आपका दावा ये है ना कि your love is pure, realize and understand that love which is pure can never take you to hellfire. वो चीज जो दोजख में ले जाने वाली है ना, that can never be pure, right? That can be pure as per your and our definition of pure, but that will not be absolutely pure. And God loves pure love, right? Yet again, the jawab is the same. If you experience pure love actually, right? If you really experience pure love, you will know how dirty and aluda this love is, right? The reality is we've never experienced pure love. हमने आज तक जिस चीज का तजर्बा नहीं किया ना, जिस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, हमें उस चीज का फ्लेवर ही नहीं पता. अगर मैं आपको आज बोलूं कि there is this red or black guava in Canada which is found in just one farm, उसका टेस्ट बहुत phenomenally amazing होता है, right? वो मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, मिर्ची वाला भी होता है, अच्छी खुशबू वाले भी होते हैं. मैं आपको सारी चीजें सुना दूंगा. उसका टेस्ट गुलाब जामुन जैसा होता है, और अमरूद जैसा होता है, और अंगूर जैसा होता है, और आम जैसा मिक्स होता है. आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है. यू विल नेवर नो एग्जैक्टली व्हाट इट टेस्ट लाइक until you actually taste it. जब तक उसका मजा आपके मुंह में नहीं आएगा, उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा. मैं आपको जितना भी सुना दूं, right? The reality is we have never experienced true love, right? Because we have not gotten into that cycle or that mahal or that company where pure love can actually be felt. Since we have never felt that, we assume that what we feel is the best that is available, right? Time only tells about that, right? More lies we tell ourselves. I don't have female friends, but the internet is my best friend. I spend a lot of time on my computer, on my laptop, alone, and that is the best way for me. I don't want a girlfriend or a boyfriend or female friend or a wife, right? To this I'm going to, there is a verse in the Quran Kareem where Allah Subhanahu wa Ta'ala says, "La taqrabu zina," right? Zina के करीब भी ना जाओ, zina के करीब भी ना जाओ. अब ये समझने की कोशिश करें कि zina is actually the act of committing adultery, right? Things that lead you there, Allah Subhanahu wa Ta'ala has strictly told you not to even go near that. Right? It's not do not commit zina, it says do not go near zina. That means anything that can lead you to do zina, that is something that you need to stop from also. Right? I have a daughter, 2 साल की. हमारे घर में एक कमरा है, उसमें छोटा सा सॉकेट है जिसमें से वायर्स निकले, लाइव वायर्स. राइट? जब वो उस जगह पे जाने का कहती भी है ना, तो मैं उस कमरे का दरवाजा लॉक करके उसको बाहर बिठा देता हूँ. Right? Why? Because I don't want her to go near zina. Anything that can tempt her to go near those wires, I tell her to stay very far away from that thing. Also, the door that goes into that room, I love that also. It is the same concept over here also. Zina is that bad. Anything that can lead you to zina, take you towards zina, is a step towards zina, tempt you to zina. Allah subhanahu wa ta'ala has told you not to even go near that. Right? So, that is the first response. I have male and female friends both. Right? Same rule I stated above. First and foremost, do not go near zina, and secondly, do not assume you're strong enough to keep it platonic. Right? ये भी एक अच्छी बला लफ्ज़ है, right? Platonic. हम इस जबरदस्त किस्म की misassumption में चलते हैं that we can be friends with the opposite gender and keep it platonic, keep it casual, keep it halal. Do not get trapped in the trap, right? Allah Subhanahu wa Ta'ala क्या फरमाते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, do not ascribe purity to yourself. Do not assume and claim that you are strong enough to pass through it without getting impacted. Do not think you are stronger than Hazrat Yusuf alayhi salam, right? When he was invited to sin, what did he do? He ran away, right? And what do we do? नहीं हमें कुछ नहीं होगा, वो फर्क नहीं पड़ता, संभाल लेंगे. ये होता है ना, कोई टेंशन नहीं है, दोस्ती तो है. ये जवाब होते हैं हमारे. Do not ascribe purity to yourself. Do not think you can manage in a platonic way. That is an बेवकूफी on our part, right? I am involved in a relationship. First and foremost, if you're involved in a relationship, realize and understand. The first thing you need to do is you need to repent, right? The verse of the Quran Kareem, Auzubillahi minash shaitanir rajeem. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क्या फरमाया? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम.
What did Allah subhanahu wa ta'ala say? इस पे तवज्जो दीजिएगा थोड़ी सी, right? Allah subhanahu wa ta'ala says, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, या इबादी, कह दीजिए, क्या कह दीजिए, ए मेरे बंदे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले फरमाया मेरे बंदे, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे कौन बंदे, जिन्होंने अपनी नफ्स के खिलाफ साजिश की, आजमाइश की, गुनाह किया। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले क्या फरमाया कि मेरे ही बंदे हैं, और आगे क्या फरमाया, मेरे कौन से बंदे, जो गुनाह करते हैं, जो गुनाह करते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा जानने वाला हो ना जो हमारे खिलाफ साजिश करे, या हमारी कहीं भी बात ना माने, या हमारे खिलाफ काम करे, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे ए मेरे दोस्त जो इसने मेरे खिलाफ काम किया, हम क्या बोलेंगे, यार तू मेरा दोस्त नहीं। अल्लाह ताला क्या बताते हैं, ए मेरे बंदे जिसने मेरे खिलाफ गुनाह किया, जिसने मेरी कहीं भी बात को नहीं मानी, मेरा बंदा बावजूद इसके वो है, राइट। दिस इज द इमेंस रहम एंड करम ऑफ अल्लाह ताला, दैट he is mukhatib of us despite telling us that you are sinners, right? आगे क्या फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, never despair of the mercy of Allah, right? तुम मेरे बंदे हो, तुमने गुनाह किया, मेरे रहम और करम से अपने आप को भाने से, never think that you are outside the scope of my mercy, right? Irrespective of how much you have sinned, do not ever assume that I am not going to forgive you, I am not going to accept you back, I am not going to take you back, I am going to throw you away. Allah Ta'ala categorically refuses that. Yeah, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, बेशक Allah Subhanahu wa Ta'ala forgives all sins, right? तुम्हारी सोच जिस गुनाह तक जाती है ना, अल्लाह ताला उससे भी बड़ा गुनाह माफ करने वाली शर्त क्या है, कि अल्लाह ताला की तरफ वापस आना है, to return back to Allah Subhanahu wa Ta'ala. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, बेशक Allah Subhanahu wa Ta'ala इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर है रहीम, right? So the first thing you have to do is you have to repent to Allah Ta'ala, and the next thing you have to do is you have to tell Salim bhai, please go talk to my dad. If he agrees, I am game, I am on board, and he thinks he does not agree, then I am sorry, we are going to take it back up when you are old enough and when I am old enough. That is the only way to take this ahead, and that is the only way that will lead to an eventual happy marriage. Right? Sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, it is better for a believer to be struck in the head with a hot iron rod than to touch a woman who is not lawful for him, right? Yet again, see the wordings, it is better for a believer to be struck in the head with a hot iron rod, right? दोनों चीजों को compare करा, analogy draw की, और फिर क्या फरमाया, ये जो है सर पे hot iron rod से मार खाना जो है ना, that is better for you than to touch a woman, or for a woman to touch a man who is not lawful or halal for him, right? When a man and woman are alone together, shaitan is the third with them, right? Now there are many dangers of halal relationships, right? There are many dangers of haram relationships. Because we are somewhat shorter time, we are going to skim or jump through them. More lies we tell ourselves, I am dating her because I want to eventually marry him or her. Marriage is to be a commitment. I will get into it once I know him or her well enough, right? ये और दो चीजें हम अपने आप को बोलते हैं. There are physiological implications for that. There are psychological implications for that. I'm going to give these slides to Dr. Abdullah Sahab. You can inshallah take these from him eventually because I'm going to skip through them. एक बजे का टाइम नहीं होगा. There are social implications and there are spiritual implications for being in a non-halal relationship, right? Now, what is love? मैंने शुरू में कहा था, I'm going to define love. I'm going to come to a quote from Mr. Mark Twain, right? थे तो फरंगी मगर $1 million बात कर. Mind-blowing sentence or concept he has and Dean also funnily enough. What does he say? Love seems the swiftest, but it is the slowest of all growths. ये समझने की कोशिश करें कि when you fall in love, it is the swiftest. It is something that sweeps you off your feet, like the Cinderella novel and the story and the Disney play. But there is an additional catch to it. It is the slowest of all growths. Right? Realize and understand. अगर आपको सुबह में किसी से और दोपहर में किसी और से और शाम को किसी और से मोहब्बत हो रही है ना, right? सुबह कैलकुलस में किसी से, पार्क स्टडीज में किसी और के साथ, और शाम में स्कूल से घर जाते हुए किसी तीसरे पे आपकी नजर पड़ती है, आप कहते हैं, oh my God, I'm in love with this boy or girl. Realize and understand that is not love, right? That is your mind playing games with you, right?
पहली नजर में क्या बोलते हैं इश्क और प्यार नहीं हो सकता. It's a mind-blowingly foolish concept which has been fed to us yet again. आप इसका इल्जाम जिस पे भी ठहरा लें, but it has been fed to us which is incorrect, inherently incorrect. Love is something that grows over time. Right? In an arranged marriage also there is very little love at the start, but as it grows and progresses, जैसे कि जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे साथ मिलकर कुर्बानियां दी जाती हैं, जैसे कि जैसे साथ मिलकर बच्चे होते हैं, बच्चों को बड़ा किया जाता है, साथ मिलके कहते हैं सास बहू के मसले सुलझाए जाते हैं. These are all things that happen in a partnership for a couple in a marriage. With time the bond grows, right? I'll tell you this also, according to many studies, the ladai that happens between a couple, that increases their love for each other, right? Because of that there is more understanding that happens. So love is something that develops and grows over time and over a long period of time. And what does he say after that? No man or woman really knows what perfect love is until they've actually been married a quarter of a century, right? According to him, 25 साल लगते हैं भाई. हमारे क्या होता है 25 सेकंड या 25 मिनट, 25 घंटे या 25 महीना बहुत बड़ा तीर मार दिया, right? 25 months at the most. What does he say? It takes 25 years to realize and understand. If you spend time exclusively with one person to understand what really love is, and once you know that, once you spend 25 years, you would realize how napak and ghaliz this is, right? I just come back to you. How impure or how minute this is, how irrelevant this is. This is what I was talking, because at that time when we are in this relationship, we think this is the best and the most important thing. वक्त गुजरता है तो समझ आता है. जी आपका सवाल था पूछिए. Sir, sometimes couples are not in love, but that attachment, emotional, interaction between them, sometimes that forces them to stay together instead of the love. So what do you say? This is what I'm trying to tell you. Na, there are some social cultures where it is called infatuation, where it's called codependence, where it's called being very good friends, where it is called being क्या बोलते हैं emotionally support. This person is my emotional support, right? This is exactly what I'm talking about. You want to call it love or you want to call it that. Even if they confess their love for a person, for a couple who are emotionally connected to the other person. Even मेरा कोई problem होता है, just discuss with him, right? मुझे कोई problem होती है, discuss with her, right? Even if they make it official and call it, claim it is the dating phase, their relationship does not change beyond that point, right? It remains the same. So what I'm trying to tell you, the label does not matter, right? It could be a label of being in a relationship, or it could be a label of being emotionally dependent, or being comfortable, or being a trusted friend of this particular person. The label could be anything. The concept, idea, soch, and the implications are the same. That is what I'm trying to tell you, right? Finding halal love, right? Salim and Parveen, coming back to Salim and Parveen again. I'm going to come back to you. We have to Zari, iske baad I'm just going to wrap up, right? Salim and Parveen फिर आता है. What happens? They work on an assignment, right? There are 3 conditions that need to be followed. Because we live in a society where there are colleges, universities living through one, and you are going through one right now. There needs to be 3 conditions that need to be very particularly followed. If this assignment has to end in a halal manner, right? First and foremost, whenever the interaction happens for an assignment, it needs to be limited. It needs to be restricted to the work that is required. If it is a philosophy project regarding Iqbal, let's just call it that, then the entire discussion needs to happen on that topic which is for the research. ये सवाल पूछना आपके बच्चे कैसे, और आपके भाई कैसे हैं, आपकी अम्मा कैसी हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, आपके प्रोजेक्ट कैसे हैं, that is irrelevant. It does not make sense to go beyond the discussion that is required. It needs to be limited. Secondly, it needs to be professional, right? There needs to be no jokes. There needs to be no additional shughal masti hanging out beyond the scope and absolute requirement of the project. And third, it needs to be public, right? It needs to be in the public eye. It needs to be in a place where you are visible to outsiders. It needs to be in a cafeteria where people can see you and people know exactly what you are meeting the other person for, right? Your friends know why you're meeting this person, and his friends know why he's meeting you. And even better if there's a third or a fourth person over there, right? But it definitely needs to be in a public place for sure, right? हमारे लम्बे वो DRs होते थे, discussion rooms,
Right? They used to be secluded places outside the public. That is not one place that you can go and have a project meeting for that. Right? When the assignment finishes, there needs to be okay Salim Allah Hafiz, okay Parveen Allah Hafiz. If Salim actually likes him and wants to get married to it, there's a very easy way to do that. Right? Either Salim can wait until college university is over and Salim starts to make some money, or Salim can go to his mom and dad and send a proposal. There is no harm in that. Parveen can do the same thing also. Islamically speaking, fun fact, a woman has 100% the same rights in sending a proposal to a man as a man has in sending a proposal to a woman. It's just our subcontinent, martial society, culture, whatever you want to call it, where a man is only meant to send the proposal. In case Gati or Nichla, if a woman sends it, yet again, I don't understand the concept and idea सोच कहाँ से आया और क्यों हमारे माशरे में ना promote होगा. It is 100% acceptable for a woman to be sending a proposal for a man also. Through the proper channel, of course. Through the proper channel, of course. Right? So, assignment finishes. There is no hello, hi, how are you doing, WhatsApp, Facebook, Instagram, nothing that has happened over there. There is no time wasting, priority changes, nothing that happens. There is no investment of time, money, effort, blood and sweat that has happened. What has happened? You just send the proposal. Right? If the proposal is accepted, you live happily after. If the proposal is not accepted, at least there is no emotional turmoil, depression, anxiety, stress, nothing is happening over there because the rule I told you earlier, there has been no investment of time, money, effort, sweat and blood that has gone into it, right? Achha, these are some points with regards to halal love and marriage, right? There's a verse in the Quran where Allah Subhanahu wa Taala says, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Right? The translation is they are your garments and you are their garments. Right? It's in the Surah Al-Baqarah. It is defining the institute, the concept, the idea, the sort of marriage. Right? First and foremost, realize and understand. Allah Subhanahu wa Taala says this because clothes are close to you. Your spouse is meant to be extremely close to you, more closer than anyone else. Right? There is a separate workshop we are taking we do on marriage counseling and towards a blissful marriage where we give a lot of details on this. But your spouse is meant to be the closest person for you. First, secondly, clothes protect you from your skin from the outside. Clothes protect the skin from outside. Similarly, your spouse is meant to protect you from outside attacks, outside people, outside problems, and the fitness. Right? So those clothes beautify you. Similarly, the spouse is meant to beautify you. I will tell you this is a source concept idea, and they look good together. Right? It is an Shariat. They are meant to good look together. Right? If they are in a halal, jaiz, proper relationship, they complement each other. Right? They finish each other's sentences. This is yet again not a benchmark. I've seen some couples which are not married who end up finishing each other's sentences. This is not a benchmark, but yet again they look good together. Right? And the fourth thing is clothes are comfortable. Right? You're meant to be comfortable with your spouse, with your wife, with your husband. Right? And those are hide and screening, which is similar. Those keep your taqwa and keep your haya intact. Right? And this is among the signs that He has created for you wives from amongst yourselves so that you may find tranquility in them. Right? So they are meant to actually give you sukoon and tranquility. Right? So this was the session that I was meant to do. Is there any question, inshallah? अभी सवाल अभी नहीं है बाद में कुछ सवाल है तो आप पूछ लें और इंशाल्लाह we are going to wrap up after that. इस सवाल का जवाब मैं असल में अभी देने लगूंगा ना एक नया 1 घंटे का सेशन हो जाएगा राइट मैरिज काउंसलिंग इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा आपने इनका सवाल है या मैरिज में इश्यूज आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें मैरिज में इश्यूज दोनों केसेस में आते हैं मेज भी हलाल बेस्ड मैरिज और नॉन हलाल बेस्ड मैरिज दोनों में आते हैं देयर इज नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट राइट देयर इज नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट उन्होंने एक बात की उसका मैं थोड़ा सा जवाब देता हूं जब क्या मास्क उतरता है जब हकीकत पता चलती है इफ इट्स अ अरेंज मैरिज और इफ इट इज अ हलाल मैरिज राइट उसमें तो पहले का मास्क पता ही नहीं होता ना उसमें तो एक ही दफा मास्क उतरता है जो हकीकत होती है राइट दैट इज मच इजियर टू हैंडल एज कंपेयर टू
getting married assuming there was one mask and then later finding out कि यार चेहरा जब खुला तो क्या सिलसिला था, right? Right? So there is a big difference. That is why I am trying to tell you कि ये वाला जो है ना halal sharia compliant marriage, you just have to tackle this problem once, right? अब उसको handle tackle कैसे करना है, that's extremely detailed, right? वो जब कोई ऐसा आएगा हमसे पूछेगा कि exactly हमारे घर में ये problem पंगा है, सिलसिला है, then there is a custom solution to everything. मैं आपको ये तो बता रहा हूँ ना, अगर खाली हम मैंने 1% मैंने इस चीज को मना नहीं किया, you should not look go for looks. Realize and understand, looks should be there definitely. They make a difference, but they should not be the only criteria. हमारे होता क्या है, हम सिर्फ पैसा और हुस्न देखते हैं, right? हमारे मर्द हजरत साल, right? तो अगर सिर्फ ये जो चीजें देखेंगे ना, तो इसमें राइट है कि पैसे का भी एतबार नहीं है, right? वो आ रहा है ना, फाइनेंशियल क्रंच आने वाला है, ग्लोबल रिसेशन, वी आर अबाउट टू, मेनी पीपल विल गो बैंकरप्ट आजकल, जिसके नाम आप बड़े बड़े हैं, 5 साल बाद उनका नाम ही ना हो दुनिया के स्कोप. Question also, the beauty also fades over time. Yet again, like I said, this is extremely shallow approach. The primary thing you need to judge is, I'll tell you something, जो हमने तजर्बे में सीखा ना, एक क्या is the woman going to keep घर बना के चलाएगी, you get my point? Is she actually of a character which will be beneficial to the entire household in the longer scheme of things first, and secondly, will she be able to manage, right, how her character is, and then beyond that, if there is looks and there is money, you need to put this, right? It's not a problem. So looks or पैसे को primary criteria नहीं बनाना चाहिए. One last question from this, then we will back. इन्होंने भी सवाल हाथ में हो गया जी, आप सवाल पूछिए. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलेंगे. सलीम और प्रवीण की जो 2 महीने की असाइनमेंट के दौरान भी आपने मैनेज को जो है वो डिस्कस किया, और असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आपने उसको डिस्कस किया कि वो अल्लाह दुनिया की, अगर मेरी इतनी ज्यादा मालूमात नहीं है, थोड़ा सा अभी आपको की लाइफ के अगर हम दूसरी भी तो मेरी शादी भी वो भी वर्किंग रिलेशनशिप है, तो भी कभी जाती है, तो आपने ड्यूरिंग असाइनमेंट एंड आफ्टर असाइनमेंट जो है उसको डिस्कस किया. मैंने जो वो शादी वाला सिनेरियो बताया ना, उसमें मैंने ये बात बोली, असाइनमेंट खत्म होने के फौरन बाद रिश्ता वेच की शादी करना नॉट प्रॉब्लम, अगर हो जाता है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फाइनेंशियली independent at that time when he got married to Khadija, right? उस टाइम he was able to manage a house, and secondly there was not a lot of requirement. Yet again मैं आपसे बात करूँगा, it was a different time where if a woman had the money, that was sufficient enough for the family or a couple. आजकल ऐसा जमाना नहीं. Yet again, आपके सवाल का प्राइमरी जवाब ये है, if you are responsible enough, you can without any problem get married initially. Inside college university also there is no problem. We had couples in London who were married, right, at the age of 20, 21. There is no problem over there if you have the financial stability to do that. It was Last question, maybe, please. According to women, उनको जो अगर उनकी जैसे 20s है, sometimes लड़कियों को जो है पार्टनर चाहिए होता है, लेकिन आफ्टर समटाइम्स उनकी शादी हो गई तो अब उसकी जो नीड्स है वो डिफरेंट हो जाएंगी. फिर जब वो थोड़ी और बड़ी एज क्रॉस करेगी, उसको एक सपोर्टिव बंदा चाहिए होगा, कि वही बंदा जिससे उसकी शादी हो उसको सपोर्ट करे. फिर एज के साथ साथ उसकी नीड जो है वो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन जो है फिर आपने समझा ना कि ब्यूटी जो है वो शेड हो जाती है टाइम के साथ साथ. ठीक है. अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे उसको शादी करनी है, जब उसकी एज है कोई जो भी उसको लगता है कि उसको शादी करनी चाहिए, तब अगर उसकी है कि तो उस चीज को किस तरह से वो करे कि
मैं आपको मुझे ये चीज मैं बात वाज़ेह कर दूं, I have no problem with good looking men or women, I tell you that, right? You can find the most good looking person alive for all I care. He should have a good character. Your criteria should be character, not looks. Along with looks, my mistake. It should be character along with looks. Sir, not that beauty is like एक लड़के होते हैं जो थोड़े दीनी तरफ होते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं और बहुत मतलब इस्लाम के वैसे चलते हैं, और दूसरे होते हैं थोड़े चॉकलेट बॉय। जी जी आगे बात करें। इससे हमारा पर्दा करने लेकिन हमारे सेकेंडरी मैं अपना पर्सनल कहूँ तो मुझे ऐसा है कि अच्छा दिखने वाला हो, लाइक मैं प्रेजेंटेबल हो, लेकिन अगर हमारी से है तो वो है कि इस्लामिक बंदा हो, दाढ़ी वाला हो, और इस्लामिक एजुकेशन भी मिली उसने, पहले उसने यूनिवर्सिटी ना पढ़ी हो लेकिन उसने पीएचडी किया हुआ इस्लामिक में। मुझे आपका सवाल समझ आ गया। आपका Okay, let him answer, please. आपका प्राइमरी कंसर्न ये है कि वो जो दीनदार नॉर्मली दाढ़ी टोपी वाले लड़के होते हैं, दोज आर नॉट प्रेजेंटेबल और गुड लुकिंग और नॉट अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट, आई टेल यू दैट। इफ योर प्रेफरेंस, आई डोंट नो आपके घर का माहौल सिचुएशन पेरेंट्स प्रेशर क्या है, दैट इज समथिंग आई डोंट टॉक अबाउट, बट इफ योर प्रेफरेंस इज बीइंग गेटिंग मैरिड टू अ पर्सन who's physically not practicing on deen, there's no harm in that, right? It's only a matter of time. If you are strong enough in deen, he's going to become religiously practicing over a period of time. If you get a boy, if you decide to follow a boy who's physically deeni practicing over a period of time, you're going to become more physically deeni practicing. This is how couples work, right? मैं जो पूरी कॉन्वर्सेशन में सेशन में बेसिस बनाना चाह रहा हूँ ना, वो दीनी हुलिया नहीं, दीनी किरदार को बनाना चाहते हैं, राइट? हुलिया वक्त के साथ आएगा नहीं आएगा, दैट इज येट अगेन, किरदार इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट। So you need to look at the kirdar of a person, you need to look at his characteristics, his personality traits. Along with that, if there is a certain huliya you require, that is fine. But if you have pressure from home, from dad, from mom, right, then that is something that either you need to get someone to speak with your parents, or you need to speak with your parents regarding that yourself, right? Okay. Thank you so much. Jazakallah khair. So our next speaker is here. Inshallah, he will be speaking on overcoming stress and anxiety. Bismillahirrahmanirrahim. We're gonna do one thing before we start, and that is mandatory for the students and optional for the faculty. Every student needs to stand up right now. Stand up and please stretch. क्योंकि बहुत लंबा सेशन, please stand up, please stand up. बहुत लंबा सेशन हो चुका है एक ऑलरेडी, माइंड नम हो गए होंगे, तो we need like freshen up, थोड़ा सा stretch कर दे, फिर we'll start. अच्छा ठीक है, अब टाइम थोड़ा कम है तो थोड़ी कम स्ट्रेचिंग है, प्लीज सिट डाउन। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा हमारे पास टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है, तो आई ट्राई टू बी स्विफ्ट इंशाल्लाह। क्वेश्चंस हम आखिर में रखेंगे, अगर हमारे पास टाइम मिला तो इंशाल्लाह वी विल एड्रेस दोस। इंट्रोडक्शन भी शॉर्ट रखूंगा। माय नेम इज जवाद महमूद। मेरी स्कूलिंग ओ लेवल्स वाज फ्रॉम जाफर पब्लिक स्कूल, ए लेवल वाज फ्रॉम कराची ग्रामर स्कूल, देन आई वेंट टू लम्स। माय बैचलर वाज इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई वर्क इन दराज रॉकेट इंटरनेट एंड देन इंग्रो। नाउ I have my own business, alhamdulillah, father's business. Father's passed away, so I'm handling that with my brother. That is a basic introduction. Moving on. अच्छा, साथ साथ हिकमा इंस्टीट्यूट में मेरी पढ़ाई भी चल रही है। दरस निज़ामी कोर्स है आलिम का, so alhamdulillah I'm in the 7th year. It's a total of 8 years. I started in 2016 somewhere, so alhamdulillah it's the 7th year now. Next year inshallah I'll be graduating from that. Starting with our presentation. So overcoming stress and anxiety. अभी देखें, हिजर साहब ने कह दिया है कि असाइनमेंट हो गया, उसके बाद असाइनमेंट जब ख़त्म हो तो उसके बाद सीधा पेरेंट्स के पास जाए।
लेकिन मसला ये है, हमारे पास यहाँ 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी असाइनमेंट के बाद कुछ ना कुछ कर चुके होंगे, रिलेशनशिप पे होंगे। तो खिजर साहब ने कहा है कि उनको तो ब्रेकअप करना चाहिए। ब्रेकअप के बाद क्या आता है? स्ट्रेस एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So before we start, I want all to recite Durood. We pray that may Allah subhanahu wa ta'ala accept our presence here, accept this majlis, mashallah. It's a very barakat event. It has very pure intentions at the back, and everybody has taken out time, mashallah, to attend this. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept this from us, and may He make it a source of maghfirah for us. Okay, overcoming stress and anxiety. Stress and anxiety is a very common problem. 65 to 75 of the global population, they say, are stressed or anxious in some way or the other. ठीक है? अच्छा, मैं जो यहाँ फोकस करूँगा वो मैं बहुत एक यूथ सेंट्रिक अप्रोच रखूँगा. I won't go to things that stress out 35 years old or 45 years old. मैं यहाँ पर बात करूँगा जो let's say 15 या 18 to 24 वाली जो एज है ना, उनके जो causes of stress हैं, we'll discuss those, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो we need to marginalize it, narrow it down to something. So 60% of the 18 to 24 years old are reported globally to be stressed in some way or the other. It's a very major problem that needs to be addressed. And 25 to 34 years old में 41%. अब ऊपर जाके हो भी कम जाता है, तो ऊपर जाके इतना प्रॉब्लम भी नहीं है. We need to address where it's getting the most attention. Stress क्यों हो रहा है? 60% लोगों को जो 18 to 24 years old है, that's more than 1 person in 2. That's 2 in 3 almost. ठीक है? 49% कहते हैं they experience high levels of stress because of comparing themselves with others. तो एक सवाल आता है, क्या सवाल? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हमने इसको एक ओवरऑल कवर करना है. और स्ट्रेस हमें कॉज करता है स्लीपलेसनेस, कांस्टेंट हेडेक्स है, फ्रस्ट्रेशन है, सिंकिंग फीलिंग इन द स्टमक है, हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर करता है, हार्ट डिजीजेस कॉज करता है स्ट्रेस. सवाल आता है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, आप सोचेंगे ये बड़ा फजूल सवाल है कि इज स्ट्रेस बैड फॉर यू? जवाब, नॉट नेसेसरीली. क्यों? पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है ना. तो वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस इट इज टू एक्चुअली एड्रेस. स्ट्रेस बैड नहीं है, वी नीड टू रियलाइज दिस फर्स्ट. इसीलिए हमने इसको क्या किया कि ओवरकमिंग, मैनेजिंग स्ट्रेस है. हमने ये नहीं कहा इरेडिकेटिंग स्ट्रेस. दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ आवर कन्वर्सेशन टुडे. इरेडिकेटिंग स्ट्रेस नहीं है, ओवरकमिंग है, मैनेजिंग स्ट्रेस है. जिस तरह आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, आप पढ़ते होंगे ये वाले सारे सब्जेक्ट्स में. एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक प्रॉपर स्टडी है, उसको समझना है ताकि यू नीड टू फोकस ऑन एवरी अदर थिंग, एवरी अदर प्रोजेक्ट दैट यू हैव इन दिस यूनिवर्सिटी. कॉन्जेनाइटल एनाल्जेसिया का पता है किसी को? नहीं पता? चलिए मैं एक और सवाल करता हूँ. अगर लेट्स से आपको किसी ने बहुत जोर से मारा, आपके वालिद ने आपको बहुत जोर से लगा दिया एक थप्पड़, यू फील पेन. ठीक है, या अल्लाह ना करे जैसे समवन कोई बार ही गेट्स शॉट, ही फील्स इमेंस पेन. अगर आपको वो पेन फील ना हो, इज दैट गुड फॉर यू? व्हाई नॉट? अगर आपको किसी के मारने पे, इफ यू गेट शॉट, आपको पेन फील ना, आप सुपरमैन बन गए ना, यू आर नॉट फीलिंग पेन, तो क्या ये अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग? बुरी है. क्यों है? दिस इज द थिंग. कॉन्जेनाइटल एनाल्जेसिया जो है ना, उसमें क्या होता है, योर पेन सेंसर्स डाई डाउन. इसका मैं आपको नेगेटिव साइड बताता हूं. हमने ये एबनॉर्मल है मान लिया, अल्लाह ताला की तरफ से पेन फील करना भी एक रहमत है. किस तरह है? यू स्लीपिंग इन योर रूम, स्लीपिंग इन योर रूम, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आग लग गई. व्हाट मेक्स यू आउट? पेन, राइट? स्मोक है, आप सफोकेट हो रहे हैं, आपको गर्माइश आ रही है, जिससे स्मोक नहीं आ रहा, आपको तपिश आ रही है, आपको उसकी हरारत आ रही, यू फील बर्न. उसके बाद आप उठेंगे, व्हाट वुड यू डू? आप सीधा भागेंगे बाहर. कॉन्जेनाइटल एनाल्जेसिया ऐसी बीमारी है वे यू डू नॉट फील पेन. अब आप इस बंदे को इमेजिन करें जो सो रहा है, इज अ वेल वेंटिलेटेड रूम, इज नॉट सफोकेटिंग. ठीक है,
Would he wake up? No. He would die. अब अगर आप इस बंदे से पूछें कि यार आपको अगर पेन फील करने की, हालांकि उसने सारी जिंदगी ये सुना होगा यार तुम्हारी ऐसी है ना, तुम्हें तो पेन फील नहीं होता, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मारे चोरे तुम तो यार सुपरमैन, वी कॉल दैट पर्सन सुपरमैन हु डज नॉट फील पेन। और पेन दोनों किस्म का, पेन दिल में भी आता है और पेन फिजिकली भी आता है, एंड इट इज अ रहमत टू फील दैट पेन। ठीक है, तो इसी तरह स्ट्रेस फील करना ऑल्सो अ रहमत। स्ट्रेस फील करना इज गुड फॉर यू, व्हिच वी डिस्कस्ड। किस तरह है, लेकिन उसको फिर आपने आगे डिवाइड कर दिया। आगे डिवाइड किस तरह किया आपने? अच्छा बैड क्या है, अगर ये अच्छा है, स्ट्रेस अच्छा है, क्रॉनिक स्ट्रेस बैड, फीलिंग उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल फीलिंग में परमानेंटली रहना बुरा है। वो क्या करता है, क्रॉनिक स्ट्रेस आपके साथ ये सारे काम करता है जो हमने डिस्कस किया ना, डिप्रेशन में डालता है, डायबिटिक करता है, हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है, हार्ट डिजीजेस है, इरिटेबल बाउल है, irritable bowel syndrome, obesity, low sex drive. These are all the things that being in a stressful situation constantly put you through. क्या करना, क्या है, how do we overcome stress, how do we manage it? उसके लिए इसको समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। एवरीथिंग, knowing the enemy is half the battle won। सबने सुना ही होगा ना, सबने सुना। If you know your enemy in yourself, you need not fear the result of 100 battles। ये Sun Tzu है, Chinese the art of war इन्होंने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि अगर आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने एनिमी को जानते हैं, और फिर आप अपने आप को जानते हैं कि कैन यू हैंडल दिस सिचुएशन, कैन यू अडेप्ट टू दिस सिचुएशन, तो आप 100 जंगे लड़ते हैं। There's no problem, there's no problem। Types of stress, पीछे चले गए, पीछे कैसे जा रहे हैं? So there's a desirable stress, it's a matloob stress, and there's a undesirable stress। ये दो डिवीजन है स्ट्रेस की, स्टैट की। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये याद रखिएगा, हम लोग इसमें भी आगे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा क्या है, अब देखें स्ट्रेस लेवल्स आपको किस तरह अफेक्ट करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ना कि स्ट्रेस इज गुड, तो वो कैसे है, वो इस तरह से है कि लेट्स से आपको आज एक असाइनमेंट मिलता है, टुडे इज 7th of December, और आपने वो सबमिट करना है कब, लेट्स से 30th of January को। ठीक है, यू हैव मोर देन अ मंथ एंड अ हाफ। आप अभी बिल्कुल शुरू ग्राफ में, आप शायद 0 से भी नीचे हैं स्ट्रेस में। आपने कहा यार अभी तो पार्टी करने का टाइम है, तो पहले 1.5 घंटे 1 महीना में बता दिया। ठीक है, एज टाइम मूव्स ऑन, टाइम मूव्स ऑन, 1 हफ्ता गुजरा है, 2 हफ्ता गुजरा है, अभी आप काम लेवल्स पे हैं। ठीक है, यू आर फीलिंग स्ट्रेस अबाउट इट। अभी आप सिर्फ प्लानिंग भी नहीं कर रहे, अभी आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार ये असाइनमेंट है, आपको सिर्फ डेडलाइन मिली है, आपको टॉपिक पता है, दैट्स ऑल यू हैव। ठीक है, नाउ लेट्स से इस असाइनमेंट की ड्यूरेशन, ऑप्टिमल ड्यूरेशन ऑफ दिस असाइनमेंट वाज अबाउट लेट्स से 2 वीक्स। 2 वीक्स अगर आपको इसके लिए दिए जाते हैं, आपके टीचर वाज डॉक्टर अब्दुल्ला वाज वेरी जेनरस विद यू, उन्होंने आपको क्या दिया, 1.5 महीना दिया फॉर 2 वीक असाइनमेंट। ठीक है, देखिए most people would not even start before the 15th, most people। और जायज है, जायज है, क्योंकि आपको सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं है पूरी यूनिवर्सिटी, you have a lot of assignments, you have a lot of workload। आपके शायद फाइनल्स भी अगले सेमेस्टर के, वो तो अगले सेमेस्टर में देंगे। लेट्स इमेजिनिंग आपका सेमेस्टर जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो आप 15 से पहले स्टार्ट नहीं करें, दैट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन क्या आपने उसको ऑर्गेनाइज करके, मैनेज करके स्टार्ट किया उस 2 वीक्स पहले, जैसे किया है, तो आप जो है ना ये बिल्कुल शुरू वाली यूज स्ट्रेस पोजीशन में हो गए। आपको इंक्रीज स्ट्रेस है, या 2 हफ्ते अब रह गए, तो आपने 1 महीने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको मैनेज कर लेंगे। आपको क्या फील हो रहा है, यू फील दैट एड्रेनलिन रश। आपको वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है, वो आपका फाइट और फ्लाइट, उसने जो है वो सिंड्रोम जो है, फाइट और फ्लाइट जो आपका एक्टिवेट कर दिया। नाउ यू ऑल गियर्ड अप, हाँ यार ठीक है मैं तैयार हूँ असाइनमेंट के लिए, ले आओ। 2 हफ्ते आपने टिका के असाइनमेंट किया, डन अ ब्रिलियंट जॉब, ठीक है।
लेकिन ये नहीं होता। यहाँ पर बैठे हुए मेरे ख्याल में 10% लोग ऐसे करते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही है। कौन असाइनमेंट 2 हफ्ते का असाइनमेंट 2 हफ्ते पहले स्टार्ट करता है? हाथ उठाना। एक हाथ है तो 2 है, 7 मिल गए हैं, 7 असाइनमेंट हो रहे हैं। अच्छा, सम टाइम 1 हफ्ते पहले कौन स्टार्ट करता है उसको? 2 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिया ना आपने भाई, है ना? मतलब अभी डेडलाइन है, 1 हफ्ते पहले स्टार्ट की बात हो रही है, स्टार्ट हो रहा है, 2 हफ्ते थे असाइनमेंट के लिए, 1 हफ्ता रह गया, आपने स्टार्ट कर दिया। एक दिन पहले कौन स्टार्ट करता है? ये देखें, ये आ गई मेजोरिटी हमारी। ये है बेचारे ब्रेकिंग पॉइंट पे, ये सारे क्या है? आपने जो 1-2 हफ्ते का टाइम था, उस वक्त आपका ये वाला पॉइंट है, मैं करीब होता मैं दिखाता। अभी आप यूज स्ट्रेस में एंटर हो रहे हैं, ठीक है? अभी आपका जो है ना बिल्कुल एक कामनेस भी है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी है, लेकिन आपको पता है मैनेज हो जाएगा, इजीली आपने निपटा दिया, आप चौके हैं। हम लोग कहते हैं चौके, जिनकी 4.0 GB होती थी ना, वो चौके कहलाते, तो आप चौके हैं, ठीक है? अगर आपने 10 दिन पहले स्टार्ट कर दिया, आप डीन जर्नलिस्ट है। और अगर आप 1 दिन पहले स्टार्ट करना, आप मेरे जैसे, यार मैंने पास होना है कोर्स, बस निपटाना है, तो ये वो वाली कैटेगरी है, ये बेचारे यूज से निकल ही जाते हैं बाहर। तो अगर आपने 10 दिन पहले स्टार्ट कर दिया, यू एन ऑप्टिमल लेवल, आपकी जो बॉडी फंक्शंस है ना, जो बॉडी फंक्शंस एट द हाईएस्ट लेवल एट दिस टाइम। अगर आपने देखा, अगर आपने शुरू से किया है ना, तो आप यू आर द बेस्ट ऑफ इन दिस सिनेरियो। आपको वो स्ट्रेसफुल फीलिंग ही नहीं आई है। यू हैव डन योर असाइनमेंट बिफोर द 15th of January, अभी तो 15 दिन पड़े हुए हैं सबमिट करने में, ये वाले हैं जो कर चुके हैं 15 दिन पहले, और ये रिलैक्स्ड है, इनके पास जिंदगी एंजॉय करने का भी टाइम है, जिम बैठ जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, आराम से चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, लोगों से सोशलाइज करते हैं 1-1.5 घंटा, मतलब इजी लाइफ है ना। और जो वो हैं जिन्होंने 10 दिन पहले स्टार्ट किया, अब वो पैनिक कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन उनका ब्रेन इस वक्त आइडियली पोजिशनड है टू डू दिस असाइनमेंट विद इन द टाइम, विद इन द टाइम। आइडियली ऐसे नहीं कंपेयर टू ये वाले लोग नहीं है जिन्होंने पहले शुरू किया, आइडियली इन अ वेरी सब्जेक्टिव मैनर कि वो आराम से अपना असाइनमेंट पूरा कर लेंगे। अब जाते हैं जो 1 दिन बाद रह गए ना, लेट्स से वो कर भी ले 1 दिन में। वैसे तो ज्यादातर ये होता है, सर जरा 2-3 दिन और दे दें, बोलो यार 1.5 महीना दिया था सर, 2 दिन और देते हो जाएगा, ठीक है? शायद मिल भी जाते हैं 2 दिन और। तो जिस टीचर ने दे दिया, डॉक्टर अब्दुल्ला ने 1.5 महीना, वो 2 दिन दे ही देंगे और मेरा सर। लेकिन आपने 2 दिन और मांग ली, क्या आप आइडियली उस प्रोजेक्ट को कर सकेंगे? you'll do such a haphazard job, you'll do such a distractedly आप उसको करेंगे। आपकी बॉडी क्यों? क्योंकि आप अभी यूज स्ट्रेस में नहीं, आप डिस स्ट्रेस में। आपकी बॉडी जो वो फ्लूइड रिलीज कर रही थी जो आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे, अब आपकी बॉडी वो फ्लूइड रिलीज कर रही है जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप सर्च करने बैठोगे, आपको समझ नहीं आएगा, मैं सर्च क्या करूँ यार, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। यू फील फ्रस्ट्रेटेड, आपका कोई दोस्त आ गया, यार चल यार फुटसॉल खेलते हैं बाहर, यार प्लीज खुदा के वास्ते दूर जा, अभी मेरा असाइनमेंट है, मुझे कल सबमिट करना है, ठीक है? और ये भी डेडलाइन गुजरने के बाद की बात होगी। तो आपका ब्रेन फंक्शन करेगा ही नहीं इस हिसाब से कि आप उसको आइडियली मैनेज करें। तो क्या है, स्ट्रेस इज गुड बट वेयर स्ट्रेस शुड बी। अगर आप उसको एक लिमिट के पार ले जा रहे हैं ना अपनी बॉडी को, जितना टाइम एक चीज का है ही नहीं, उस प्रोजेक्ट में स्टडी करनी थी आपने ओवर द कोर्स ऑफ अ वीक, आपने कुछ ऑब्जर्वेशन देने थे, आप वो 3 दिन में कैसे लेंगे? यू कैन नॉट डू दैट, यू विल मेक अप थिंग्स, दैट इज खयानत ऑल्सो। आप तो यू मेकिंग अप स्टफ। तो अगेन आगे चलते हैं, हमने आई थिंक इसको अच्छे से समझ लिया कि यूज स्ट्रेस वर्सेस डिस्ट्रेस पोजीशन क्या है। ये आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन देगा, यूज स्ट्रेस, यू नीड दिस इन योर लाइफ। और डिस्ट्रेस जो है वो आपको पैनिक मोड में डाले, लाइक वी डिस्कस्ड। आपको एट ऑल कॉस्ट उसको अवॉइड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, यू नीड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, ठीक है? डिजायरेबल स्ट्रेस, अच्छा अब मैं यहाँ बताता हूँ डिजायरेबल स्ट्रेस। स्ट्रेस यहाँ तो असाइनमेंट की बात हो गई ना, उसके अलावा क्या चीज़ है जो आपको स्ट्रेस में डालती है? क्या आपको कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा, क्या आपको
क्या आपकी जिंदगी इस असाइनमेंट के अराउंड घूम रही है? You need to ask yourself this question. क्या आपकी जिंदगी इस यूनिवर्सिटी के अराउंड गुजर रही है? क्या आपकी इस यूनिवर्सिटी के आगे जो आ रहा है आपने वो सोचा है? आपने ये सोचा है कि मेरी यूनिवर्सिटी के बाद जॉब कहाँ लगेगी? लेट्स से मीडिया आर्ट स्टूडेंट्स हैं आप लोग सारे, वैसे आप लोग मीडिया आर्ट्स में तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ ही नहीं पढ़े ना? पढ़ तो अच्छा है। मीडिया आर्ट स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये सोचा है कि मेरी इसके बाद जॉब कहाँ लगेगी, इसके बाद मेरा प्रोफेशन क्या होगा, क्या मैंने अपना काम करना है या मैंने जॉब करनी है, ये सोचा है। मैंने शादी किससे करनी है, परवीन से करनी है कि नाजिर से करनी है, ये भी सोचा है, ठीक है। लेकिन क्या मरने के बाद का सोचा है? इज दैट स्ट्रेसिंग अस आउट? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। दैट स्ट्रेसिंग अस आउट? और ये डिजायरेबल स्ट्रेस है या नहीं है? जिस बंदे को ये स्ट्रेस ना हो कि मेरी आखिरत में क्या होने वाला है, मेरी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, उस वक्त मेरा क्या हाल होगा, उस वक्त मैं किस हाल में होऊंगा, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होऊंगा, क्या मैं शर्मिंदा होऊंगा, क्या मैं अपने अमाल लेके, क्या मैं अपनी किताब लेके मेरे हाथ में दी जाएगी ना, क्या मैं वो लेके अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मेरे लिए रातों को दुआएं मांगी, मेरे लिए रोए, क्या मैं उनके आगे लेके ये किताब शर्मिंदगी के बगैर खड़ा हो सकता हूँ? थोड़ा बहुत ये डिजायरेबल स्ट्रेस, वी नीड दिस इन आवर लाइफ। अगर इस बंदे को कॉन्जेनाइटल एनर्जेसिया होता, बड़ा मुश्किल ना, अगर उसको ये होता, उसको आखिरत का स्ट्रेस नहीं होता। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा बंदा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने ऐसे जो लोग बनाए ना, उनको कहा गया है मजनून, क्योंकि उनकी अकल नाकस होती है। अल्लाह ताला ने उनको मुकल्लफ ही नहीं रखा है। Not gonna be asked, because अल्लाह ताला को पता है कि ये इनके अंदर ये कॉन्जेनाइटल एनर्जेसिया आखिरत के बारे में, they won't be asked. लेकिन us will be asked। अल्लाह ताला ने हमें कामिल अकल दी है, इस पे कुछ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि वी फील दैट स्ट्रेस। क्या हदीस है? स्ट्रेस आपको जो है ना, जिस स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ आपको ब्यूटीफुली समझ आ जाएगी। अबू उमामा रिपोर्ट में, a man asked the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is faith? mal ईमान, ईमान पूछा, ठीक है। क्या जवाब दिया? if you are happy with your good deed, इज़ा सर्रत का हसनत वसाअत का सय्यत, and you are saddened by your sins, by your evil deeds, then you are a believer। अब क्या चीज है जो आपको सैड करिए, जो आपको हैप्पी करे? क्या चीज है? The man said, "O Messenger of Allah, what is sin? If something wavers in your soul, you should leave it." क्या मतलब है इसका? किसी चीज का शक भी हो ना, किसी चीज का शक भी हो, क्या ये शायद मेरी रिलेशनशिप हलाल है, अच्छे से फजल भाई ने बात करी, लेकिन 100% तो नहीं पता ना, छोड़ दो। देखो मेरे लिए कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आई एग्री। मैं जिस फेज से लाइफ में गुजरा हूँ, मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट था, थोड़ा टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं इन सब चीज़ों में था। अल्लाह ताला का बहुत कर, अल्लाह ताला ने निकाला। मैं कोई सेंट पैदा नहीं हुआ, मैं कोई सूफियाओं के मुत्तकियों के ख़ानदानों में पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला का करम है। मैं कहूँगा इसमें मेरी एक रुपए की नहीं है कोई, मतलब आई कैन नॉट टेक क्रेडिट, एक रुपए का भी आई कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट। दुआ है, वालिदैन की दुआ थी, अपनी दुआ थी, ये दो चीजें हैं जो आपको निकालती। जो भी आपको तकलीफ है ना जिंदगी में, जो भी आपको तकलीफ है जिंदगी, ये दो चीजें आपको निकाली, किसी तीसरे की दुआ नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है, नबी ने कहा है कि पेरेंट्स की दुआ कबूल होती है आपके हक में। किसी बुजुर्ग का तो नहीं कहा, किसी बुजुर्ग की दुआ आपके हक में कबूल हो जाएगी, कहीं आया है? नहीं आया। माँ बाप का आया, कोई चीज चाहिए बाप से दुआ करा लो, गारंटीड मिलेगी। माँ तो वैसी दुआ करती रहती, माँ को कहने की जरूरत ही नहीं है। माँ ने देखा परेशान है, हाँ बेटा 3 दिन रह गए होंगे असाइनमेंट में, तुमने फिर जो है वो देर लगा दी, ऐसे ही है ना, वो बेचारी दुआ करने बैठ जाएगी, अल्लाह ताला आसानी कर। दैट इज माँ। तो बाप से कह दो एक दफा, ये परेशानी है, कौन है, परवीन पसंद आ गई है, मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा, आप अब्बा से कह दें एक दफा
चाहे वो आपको लाख सुना दे उस टाइम, लेकिन बाप जो फिगर है ना, वो सोचता है क्या पसंद है ये, मैं ऐसे ही तो मना नहीं कर सकता। ही वुड थिंक अबाउट। वो आपके सामने नहीं, आपकी माँ से पूछेंगे कि कौन है परवीन, जानती हो? नहीं जानती। कैसी है? नहीं पता, पता करना पड़ेगा। बेटे ने आके ये कहा है, ही सीरियस अबाउट इट, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, ट्रस्ट मी, इट्स गोना हैपन। लेकिन आओ तो सही माँ बाप के पास है, आओ तो सही। तो ये एक चीज है। अच्छा, अब हम जो बात करते हैं स्ट्रेस की, अब ये स्ट्रेस है ना जो आपको गुनाह के काम से तकलीफ दे रहा है। क्या हमें गुनाह करते हुए तकलीफ होती है? क्या यहाँ अजान हुई, मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मुझे तकलीफ होती है? अगर होती है ना, तो मैं बहुत किस्मत हूँ, मैं मोमिन हूँ, मल ईमान। और मोमिन के लिए इतनी बिशारतें आप हदीस में पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे मैं मोमिन बन जाऊं, मैं सीधा जन्नती हूँ। इट्स ट्रू। लेकिन अगर आपको अजान हो रही है, आप अपने फुटबॉल में, आप अपने बैडमिंटन में बिजी हैं, और आपको ये ख्याल भी नहीं गुजरा कि यार मैं नमाज पढ़ लूँ, देन माय फ्रेंड यू हैव कॉन्फिडेंशियल इन। और वो आपको नेचुरल नहीं है, यू मेड योर बॉडी नम टू इट। व्हेन यू मेड योर बॉडी नम टू इट, यू नीड टू स्क्रब इट। इस तरह नम होती है, नम इस तरह होती है, जब आप कोई गुनाह करेंगे ना, आपके दिल पे एक सियाह स्पॉट पड़ जाता है। ये सबने सुनी होगी, इसके मैंने इसको नहीं लिया, एक सियाह स्पॉट पड़। आप जब तक वो गुनाह करते रहेंगे, वो सियाह स्पॉट बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ब्लैक स्पॉट्स ऑन योर हार्ट। मेटाफोरिकली भी हो सकता है रियलिटी भी हो, वी डू नॉट नो दैट, वी नॉट सी आवर हार्ट्स। अल्लाह ताला नोज बेस्ट, अल्लाह ताला हैज सेड। तो वी आर गोना बिलीव इन इट 100% कि मेरे दिल में गुनाह करते हुए एक ब्लैक स्पॉट आ रहा है। क्या मैं उस गुनाह, उस ब्लैक स्पॉट को हटा रहा हूँ? वो ब्लैक स्पॉट कैसे हटता है? इस्तिग़फ़ार से। क्या मैं वो इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ उस ब्लैक स्पॉट को हटा? अगर मैं वो इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ ना, तो माय फ्रेंड, आई वुड फील दिस when I'm saddened by my sins and I'm happy with my deeds। मैं यहाँ आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर मैंने अल्लाह ताला से बात करनी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आके अल्लाह ताला की बात, वो मजलिस बाबरकत है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र, और वो तमाम मजलिस जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है, अल्लाह ताला के रसूल का जिक्र नहीं है, whether it be your social circles, whether it be your cafeteria lunches, whether it be anything, तो उसमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है, you will regret that on the day of judgment। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी हर महफिल में अल्लाह ताला का जिक्र जरूर होगा, हो सकता है ना हो, लेकिन जिस तरह हम गुनाह करते हैं, हम उसको रिग्रेट करेंगे आखिरत, हम इन मजालिस को भी रिग्रेट करेंगे। उसके लिए एक दुआ भी सिखाई है अल्लाह ताला के नबी ने, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क्या है, आपकी कोई बात नहीं हुई ना अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के नबी की उस मजलिस में, लेकिन अगर आपने ये दुआ पढ़ ली ना, तो अल्लाह ताला उस मजलिस के तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह ताला इतना रहीम। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे बंदों, मेरे बंदों जिन्होंने गुनाह किए, मैं माफ कर। स्ट्रेस ऑफ द आखिरह। अच्छा, ये हमने एक सॉर्ट ऑफ पहला बात तो डिस्कस कर लिया, लेजीनेस हमारी असाइनमेंट में हमने देख लिया कि किस तरह लेजीनेस स्ट्रेस कॉज करे। इसका क्या हल, आगे देखिए। दूसरा क्या है, दीज आर द टू टॉप कॉजेज ऑफ स्ट्रेस अमंग यूथ, टॉप स्ट्रेसेस। लेजीनेस है ना, हम लोग की जिंदगी में और कुछ है ही नहीं यार, हम लोग यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, हम लोग असाइनमेंट दे रहे हैं टाइम से, हमारी जिंदगी सेट है, हमारी जीवन टाइमली हो रही है, हमारी नमाज, हमारे अमाल टाइमली हो रहे हैं, हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन इफ यू आर लेजी इन दैट, इट्स गोना कॉज स्ट्रेस। उसके बाद क्या है, एंटिसिपेटरी इन्वेट, क्या है, फियर ऑफ द फ्यूचर। तो आपके पास यही दो चीजें। देखिए, और इंसान है, इंसान है ना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कोई नहीं कह रहा कि आप ये नहीं सोचो मैं कहाँ जॉब करूंगा, इसके बाद कहाँ जाऊंगा, उसके बाद मैं किस तरह कमाऊंगा कि मेरी परवीन से शादी हो जाए, होगी इंशाल्लाह, ठीक है, हलाल तरीके से। लेकिन फियर ऑफ द फ्यूचर नहीं चाहिए। देखिए, आपको ये आपका बिल्कुल जहन में आएगा कि मैं आगे क्या करूंगा, ये आपके दिल में आएगा कि मैं आगे क्या करूंगा, आगे क्या होगा, क्या मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज ऑल फाइन,
जब तक कि वो यूस्ट्रेस में हो. When you have that positive stress, when that feeling is making you go towards preparing for those interviews, preparing for that GPA that's going to get those interviews, preparing for you for that next university that you're going to apply to. अगर आपको इस चीज के लिए वो prepare कर रहा है, stress, that's fine, it's you stress. लेकिन अगर आप अपने आप को मलामत करना शुरू करें, यार तुम किसी काम के हैं, कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा, मैं क्या कमा लूंगा, मेरी क्या होगी, आज का जॉब मार्केट ऐसी है, देखिए जब तक आपके बस में एक चीज है ना, until you can control it, you can think about it, you are allowed to think about it. जब एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप क्यों सोच के वक्त जाते हो, आप क्यों सोच के अपने स्ट्रेस को टेंशन में भेज रहे हो, टेंशन को एंजाइटी में भेजो, एंजाइटी को डिप्रेशन में भेजो. दीज आर ऑल ऑर्डर्स. लेकिन डिप्रेशन क्योर करना इज $46 बिलियन इंडस्ट्री बाय द वे. लेकिन वो $46 बिलियन जो है ना, वो शायद 46 मिलियन में हो सकते थे अगर लोग उसको मैनेज कर लेते. अनमैनेज स्ट्रेस जो है ना, मिसमैनेज स्ट्रेस, वो बढ़ा रहा है इस डिप्रेशन वाली इंडस्ट्री को. नीड टू मेक श्योर आपका स्ट्रेस क्रोनिक स्ट्रेस में ना जाए, आपका स्ट्रेस डिस्ट्रेस में ना जाए, एंटिसिपेटरी एंजाइटी. अभी हम इनको देखते हैं कि हम इनको डील कैसे करें. लेट्स बी फास्ट. ठीक है, हम लोग लेजीनेस को डील करें एक्टिव प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. देखिए आपका बेस्ट दिन उस वक्त प्लान हो सकता है व्हेन इट्स प्लान्ड अराउंड योर नमाज. ये फैक्ट है. मैंने हर तरीके से प्लान करके देखा. आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, आई एम अ वेरी लेजी पर्सन. मुझे अपने आप को मोटिवेट करता है सुबह उठने के, यार आज तो इस वक्त उठना है ना, आज मेरी टॉक थी तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर भी करना था सुबह, मैं बड़ी मुश्किल से उठा हूँ, लेकिन मोटिवेशन थी. अच्छा, एक पॉजिटिव स्ट्रेस था, यार मैंने जल्दी से अच्छे से एक प्रेजेंटेशन बना लूँ ताकि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर दूँ, लोग अच्छे से समझ जाए, अल्लाह ताला खुश हो जाए हमसे. पॉजिटिव स्ट्रेस था ना. अब क्या है, अगर मैं वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं चलता, जिससे मैं यहाँ खड़ा हो जाता, मैंने बड़ी मुश्किल से एक दो स्लाइड बनाई थी, यार मैं तो खड़े होकर कोई ना कोई बात कर ही लूँ. क्या मेरी उस लेवल की बात होती आपसे? क्या वो उस लेवल से आपके दिल में उतरती? क्या मैं उसके साथ इखलास, क्या मैं उसके साथ वफा कर पाता? आई एम नॉट लैकिंग फॉर अनदर वर्ड राइट नाउ. क्या मैं उसका जस्टिस कर पाता? नहीं कर पाता. तो आई नीड टू बी प्रॉपरली प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टू गेट rid of my laziness. और द बेस्ट प्लान इज अराउंड योर नमाज. अगर आपको ये पता हो कि यार मैंने जोहर तक ये वाली प्रेजेंटेशन निपटानी है, असर तक मैंने ऑफिस पहुंच के अपने ये काम निपटाने हैं, मगरिब तक मैंने इस तरह वाइंड अप करके मदरसे के लिए निकलना है, मदरसे पहुंच के मैंने क्लासेस लेनी है, उसके बाद मैंने ईशा पढ़ के वहां से निकलनी है, घर वालों को टाइम देना है और सो जाना है. तो वेरी प्रॉपरली प्लान्ड स्केड्यूल है मुझसे, राइट. लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से चलेंगे ना, मतलब इफ यू आर्बिट्ररी प्लान, देखिए जरूरी नहीं है नमाजों के अराउंड टाइम, लेकिन क्या है, उससे आपकी अमाल की लेजीनेस खत्म हो. जब आपको पता है ना कि मेरा ये सेशन नमाज पे खत्म होगा, तो आप नमाज पढ़ेंगे. जब आपको पता है कि यार मैंने ये टाइम निकाल के जोहर के बाद मैंने कुरान थोड़ा सा पढ़ना है, बी हाफ अ पेज, आप यकीन करें, मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि फ्लुएंट है वो आधे मिनट में पढ़े, आधे मिनट में. आई कैन गारंटी दैट. और जो फ्लुएंट नहीं है उसको शायद 3 मिनट, नॉट मोर देन दैट. 1 से 12 20 मिनट में फ्लुएंट बंदे का हो जाता है. 40 मिनट में, शायद 40-45 मिनट में जो इतना फ्लुएंट नहीं है उसका हो जाता है. तो आधा पेज आधा मिनट है. इफ यू नो दैट यू प्लान योर डे इस तरह के जोहर के बाद मेरी एक आधा पेज कुरान का है, यू प्लान्ड इट ना. अब उस टाइम में कोई आएगा आपके पास, मैं कहता हूँ चलो आधा मिनट तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, टाइम भी आ जाएगा आपका, उसको आप बिठा ही लोगे. आपने लेट से प्लान किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप आधे पेज से प्रोग्रेस करते करते आप 1 से 12 पे पहुंच गए. पता नहीं तौफीक दे हम सबको इंशाल्लाह. हम 1 से 12 पे पहुंच गए, वो 20 मिनट है आपकी नमाज के बाद. अगर उस टाइम में आपके पास कोई आएगा, यार मेरे साथ यहाँ चलो, मेरे साथ कैफेटेरिया चलो, भूख लग रही, अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 10 मिनट रुक जाओ, 20 मिनट, यू हैव योर टाइम. अब बोलोगे 20 मिनट रुक जाओ, 20 मिनट में चल रहा हूँ, 20 मिनट में 12 पूरा हो जाए. 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में आधा से 12 पूरा हो जाए. यू हैव दैट ऑन योर फिंगर टिप्स. और आपके अमाल में लेजीनेस है, आपके अमाल में लेजीनेस नहीं है, आप उसका स्ट्रेस फील कर रहे हो इसलिए नहीं. देखिए स्ट्रेस फील करना जरूरी है टू नॉट फील लेजी. आखिरत का वो स्ट्रेस है
तो आप लेजी फील नहीं कर रहे। अगर आखिरत को स्ट्रेस नहीं होता ना, तो क्या होता, चलो यार, आप फौरन उठ जाते, फौरन उठते। आगे क्या है, दूसरा क्या था, एंटिसिपेटरी एंजाइटी है ना, ये तवक्कल, तवक्कल आ रहा है। दिस इज सच अ डीप वर्ड, सच अ डीप वर्ड। एक सेकंड, मैं पानी ले, सॉरी यार, मुंह सूख गया था। चलिए, तवक्कल की हम बात करें, सच डीप वर्ड। अगर आप इस चीज को डीपली अंडरस्टैंड कर लेना कि तवक्कल असल में क्या चीज है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी से टेंशन नाम की चीज खत्म हो जाएगी। when you know everything is willed by Allah, when you know for a fact कि आपको कहाँ जॉब मिलेगी, अल्लाह ताला को पता है। और ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो अमाम मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। हर जानदार का रिस्क अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया है, विच ही वुड गेट नो मैटर व्हाट। जिस तरह हदीस में आता है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, हदीस में आता है, जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है ना, क्या कोई बंदा कह सकता है कि मैं मौत से बच जाऊंगा? नोबडी कैन से दैट। लेकिन जिस तरह मौत ढूंढती है, उस तरह रिस्क ढूंढता है, उस तरह रिस्क ढूंढता है। योर नेक्स्ट सैलरी इज लुकिंग फॉर यू, आप नहीं ढूंढ रहे हो उसके लिए, इज लुकिंग फॉर यू। आपके ऊपर है कि आप उसको हलाल करो कि हराम करो। मनी इज लुकिंग फॉर यू। उसकी अगर आपने स्ट्रेस शुरू कर दी ना, क्या आपके कंट्रोल में है? क्या आपके कंट्रोल में है कि आप यूनिलीवर वालों को जाके एचआर को बोलो नहीं भाई मुझे हायर करो? कैन यू फोर्स देम टू इट? यू नॉट डू दैट। लेकिन कैन यू मेक योरसेल्फ द बेस्ट पर्सन सो दैट दे हायर यू? यस, यू कैन डू दैट। एंड शुड यू डू दैट? यस, यू शुड डू दैट। लेकिन तवक्कल अल्लाह पे। लेट्स से यू वर्क ऑन योरसेल्फ, आपने यू मेड योरसेल्फ द बेस्ट पर्सन दैट यू कैन बी, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। उसके बाद यूनिलीवर ने हायर नहीं करा, लेट्स से पर्ची आ गई, नहीं आती है बाय द वे, लेट्स से पर्ची आ गई, हम लोग कहते हैं ना पर्ची आ गई, लेट्स से दे फाइंड अ बेटर पर्सन, हो सकता है, ठीक है ना? क्या आप उसमें टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाएंगे? यू शुड नॉट डू दैट। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क वहां लिखा हुआ ही नहीं था। जब आपका रिस्क वहां नहीं लिखा हुआ तो फिर कहीं और तो लिखा हुआ है ना। अल्लाह ताला ने हर जानदार, देखिए मैं और आप दिमाग वाले हैं, परिंदों के पास दिमाग है? नहीं है ना। परिंदों के पास फ्रिज भी नहीं है कि आज जरा 2 कीड़े ले लिए, एक फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। नॉट डू दैट। एक कुरान में अल्लाह ताला उस परिंदे को जो रोज भूखा निकलता है उसको रोज सैराब करके बेचते हैं। तो मैं और आप क्या चीज है यार? हमारे पास तो अकल है, हम कुछ नहीं और गाड़ी धो लेंगे यार, कुछ भी कर लेंगे। देखिए, दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट। जितना लिखा है, जितना लिखा है वही आएगा। मैं कहता हूँ आप गाड़ी धो ले या आप एक $1 मिलियन डील स्ट्रक कर, आई गारंटी यू, अगर आपके पास वही 500 रुपए लिखे हैं ना, वो $1 मिलियन कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहां आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते और आपके पास 500 रुपए बचे। ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट। जितना रिस्क लिखा है, जितना लिखा है वही मिलेगा, उससे ज्यादा आपके होठों के बीच में भी होगा ना, वो आपको नहीं मिलेगा। और उससे कम अगर आपको मिल गया, आपके नसीब में जो है वो अगर पहाड़ के नीचे भी होगा ना, आपको मिलेगा। यू विल फाइंड इट, ट्रस्ट मी। क्या है? What has reached you was never meant to miss you. What has missed you was never meant to reach you. ये हदीस है। ऐसा हो नहीं सकता जो आपके नसीब में है और आपको नहीं है, तो फिर टेंशन किस बात की है? स्ट्रेस किस बात का है? उस पर क्या हमें स्ट्रेस लेना चाहिए? नहीं है। इट्स इलॉजिकल। इलॉजिकल एक चीज जो मेरे पीछे घूम रही है, मैं उसके पीछे भागूं, इट्स इलॉजिकल। क्या है? ये भी हमने कुरान की आयत और भी बात कर ली है। ये अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत जगह ये कहा, बहुत जगह ये कहा है कि अल्लाह ताला ने रिस्क हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है, एंड देयर इज नो यूज दिस। अल्लाह ताला क्या मांगते हैं हमसे? अल्लाह ताला ओबीडियंस मांगते हैं, पर्पस। अभी हम पर्पस पे आएंगे। अल्लाह ताला हमसे कहते हैं कि मेरे बंदे बनो, मेरे बंदे बनो। बंदे नॉट सिर्फ नमाज एंड रोजा, ट्रस्ट मी। बंदे में बहुत डिटेल है, अगर अभी हमारे पास टाइम हो हम बात करेंगे, टाइम शॉर्ट है।
अच्छा, ये ऑक्सफोर्ड की स्टडी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो द कोपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस, देखिए हमने कॉजेज भी बात करी, हमने हाउ टू डील विद देम भी बात करी, लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो आप क्या करें। लेकिन ये बात हमने सबसे सुनी, अल्लाह ताला ये कलाम में, अल्लाह ताला ये कलाम में सुकून है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। आप कुरान पढ़े, बहुत पढ़े, जितना पढ़ेंगे ना उतना सुकून मिलेगा। तर्जुमे के साथ पढ़े, समझ के पढ़े। और क्या चीज है, ऑक्सफोर्ड तो नहीं कहेगा ना कि आप कुरान पढ़े। ऑक्सफोर्ड क्या कह, ऑक्सफोर्ड कह रहा है कि अगर, अच्छा अभी देखिए 3 चीजें, मैं कहता हूँ आगे ही चलते हैं इसको पढ़ते हैं। पहली चीज क्या है, डू इट बैडली। क्या कह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड कहता है कि भाई आप बार बार अपने आप को देखते हैं कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, यू वेटिंग, यू मेनी टाइम्स यू कैच योरसेल्फ थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग। बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत ही होता है, बट यू वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, फॉर द परफेक्ट प्लान और द परफेक्ट टीम। होता है, नहीं होता सबके साथ। आमाल में भी होता है, यार मैं तहज्जुद शुरू करूंगा, भाई नमाज तो पढ़ ले, भाई फर्ज नमाज तो पढ़ ले, डायरेक्ट तहज्जुद से शुरू करना, फर्ज तो पढ़ लो, अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला तहज्जुद पूरा, फर्ज तो पढ़ो। लेकिन क्या है, हमने वो परफेक्ट लाइफ शुरू करनी है, आज हमें मुत्तकी पढ़ लेना, क्या होता है तो कल से हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे, हम प्लान करते हैं। आज दिमाग ओवर ड्राइव में चल रहा है, यार मुझे नहीं ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर लीव एवरीथिंग एल्स, और मैं जो बिल्कुल सूफी बनता, कल से मैं तस्बीह और टोपी लगा के आता हूँ। इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, इट्स प्रोग्रेसिव, इट्स प्रोग्रेशन। उसको एक्सेप्ट करें, वी ह्यूमंस, उसको नेचुरली लेके चले। अब वो क्या कह रहा है ऑक्सफोर्ड, वो कह रहा है कि भाई इफ यू आर वरीड अबाउट समथिंग, जस्ट डू इट, डू इट बैडली। हम ये कहते हैं ना कि यार हम कारोबार शुरू करेंगे, हम परफेक्टली शुरू करें, तो हम उसके लिए प्लानिंग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, हमारा वो परफेक्ट प्लान ही नहीं बन पाता कि हम उसको स्टार्ट करें। ये है एक राइटर गिलबर्ट के चेस्टरटन, वो कह रहे हैं समथिंग इज वर्थ डूइंग, इज वर्थ डूइंग बैडली। आप शुरू कर दो, आपके दिल से ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि आई हैव टू डू द परफेक्ट थिंग। मैंने अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है, मैं एक परफेक्ट स्टार्टअप लॉन्च करूंगा विच इज गोना बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। भाई ये क्यों सोच रहे हैं, आपको स्टार्टअप लॉन्च करना ड्रीम है या प्रॉफिटेबल फ्रॉम द फर्स्ट मंथ बनाना ड्रीम। स्टार्टअप ड्रीम है ना, रिस्क तो आना है ना, तो स्टार्टअप शुरू कर दो। क्या होगा, थोड़ा बुरा होगा ना। अच्छा लेट मी टेल यू, ह्यूमन साइकोलॉजी, आप ये सोच के शुरू कर दो, आप करोगे अच्छा। तो जब आपने एक चीज शुरू कर दी ना, पुटिंग एफर्ट इनटू इट, आपने क्या किया, इसमें सिर्फ टेंशन वाला एलिमेंट हटा दिया, स्ट्रेस हटा दिया। आपने उस चीज को अपने ऊपर जो आपने एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बनाई थी वो आपने हटा दी। आपने क्या किया, लेट्स डू इट बैडली। अगर बुरा हुआ हम लोग सीख जाएंगे, विल डू इट अगेन। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि आप अच्छा ही करो, ट्रस्ट मी, अच्छा ही करो, क्योंकि रिस्क आपका लिखा हुआ है, काम आपने शुरू कर दिया, अल्लाह ताला के पास है ना। तीसरा वाला आपके हाथ में है ही नहीं, तो आपने उसके बारे में परेशान क्यों हो, आपके हाथ में ही नहीं। क्या है, इनकंसिस्टेंट अमल शुड नॉट बी स्टॉपिंग यू, शुड बी ड्राइविंग। लेट्स से आज मैंने सोच लिया मैं तहज्जुद पढ़ के स्टार्ट कर, मैं तहज्जुद पढ़ भी, कल नहीं पढ़ी, क्या परसों मैं ये सोचूंगा यार नहीं मैं रेगुलर नहीं हूँ। कुरान शुरू करा, आधा पेज याद पढ़ा, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन यार मैं बिल्कुल ही लेजी हूँ यार, और होता ही नहीं है मुझसे। इट्स वेरी कॉमन फ्रेज, होता ही नहीं है मुझसे। जितना होता है, जितना होता है कर लो, फर्ज पूरे करो, फर्ज पूरे करो। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि यार कल असर छोड़ दी, आज 2 छोड़ दी, 1 छोड़ दी, आज 2 छोड़ दी, कल 3 छोड़ देंगे। देखिए इसका मतलब है you're not stressing hard enough, you're not at this optimal level of stress to get you out of the laziness. क्या है, आपने inconsistent number should not be stopping you. If you are doing it badly, start and ask. अगर आपको लग रहा है आपको चीज नहीं आती ना, आप पूछ लो, करो, पूछते रहो, करते रहो, अल्लाह ताला will make it perfect. Forgive yourself. देखिए इसमें उन्होंने कहा स्टडी में कि would you not want to lose a companion who's constantly pointing out your faults 24/7. यहाँ तो मैं फ्रेंड लिखते लिखते मैंने हटाया उसको, मैं लिखने वाला था would you not want to lose a friend, लेकिन मैंने कहा वो फ्रेंड हो ही नहीं सकता। पर्सन कैन नॉट बी योर फ्रेंड जो आपको 24 घंटा आपकी बुराइयां बता रहे कि यार तुमने ये गलत किया, तुमने उस बंदे से बात कर रहे थे, तुमने ये गलत कहा, तुमने उस वक्त जो ये बात कर रहे थे तुम्हें ये करनी चाहिए थी,
तुमने इस तरह किया, तुम्हें उस तरह करना चाहिए था, द प्रेजेंटेशन यू गेव तुम्हें उस तरह करना चाहिए था। आप एक दिन नहीं लगाओगे, मैं कहता हूँ एक 3 कमेंट्स नहीं लगाओगे, एक दिन तो छोड़ो, 3 रिमार्क्स आए इस तरह के, आप बोलोगे यार ना, आई डू नॉट वांट इन माय लाइफ, बैकस्टैबर्स कहते हैं ना, बैकस्टैबर्स, क्या बैकस्टैबर्स तो अलग होता है, लेकिन ये जो है ना यू, अच्छा, और आल्सो दीस आर टॉक्सिक पीपल। अगर आप कहते हो कि यार मेरे को साथ रखो, नहीं रखो, लूज देम, यू नो, वर्थ योर टाइम। लेकिन अगर आप खुद वो पर्सन है टू योरसेल्फ, क्या आप प्रेजेंटेशन दे के आगे सोचते हैं कि यार मैं इस तरह कह देता तो ज्यादा अच्छा था, किसी बंदे से बात करी, किसी बंदी से बात करी, आपने कहा यार नहीं वो वाली बात करता ना तो ज्यादा इम्पैक्ट आता, वेरी कॉमन। लेकिन फॉरगिव योरसेल्फ, यार आप जिस तरह से जो बात कर रहे हो ना, आप सही कर रहे हो, इट इज रिटन फॉर यू, इट इज रिटन फॉर यू, आप जैसे करो। अब जो हो गया ना, कैन यू चेंज द पास्ट? then is there any मकसद in pondering about it, in trying to think this change? अगर मैं ऐसे करता तो बेहतर था, तो फायदा है अब ये सोचने का। लेकिन अगर आप पहले सोचते कि मैं ऐसे बात करूंगा तो वो बेहतर था, तो forgive yourself। अगर आपने ऐसे कर दिया, just think about this, यार ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स अ वेरी कॉमन, शुड बी योर टैगलाइन। कोई ऐसा काम किया यार, कोई बात, हो जाता है, अगली दफा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये मैंने भी रखी है, फिर मैंने पहले ही बताई, बड़ी डिटेल में, कुल या इबाद ये लज़ीम असर को अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद ही है, बहुत पसंद। कुल या इबादी, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह किया है, ला तक़नतू, डू नॉट डिस्पेयर। जब अल्लाह ताला इतने फॉरगिविंग है यार, हु इज जजिंग यू एट द एंड ऑफ द डे? अल्लाह ताला इज सो फॉरगिविंग। I'll tell you a grammatical aspect of this ayat, ठीक है। जब अलिफ लाम आते ना किसकी, यगफिरुल ज़ुनूब आ गया ना, अलिफ लाम है ना, आप सब देखो, ज़ुनूब को भी पढ़ने आती, घर भी पढ़ने आती, इसका मतलब ऑलरेडी अल्लाह ताला ने कह दिया कि तमाम गुनाह, इन्नल्लाह यगफिरुल ज़ुनूब, अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर। आगे क्या था? आगे क्या था? जमीआ। पहले अलिफ लाम, इधर लेट्स इग्नोर, पहले क्या था? अलिफ लाम ज़ुनूब, तमाम गुनाह माफ कर देंगे। फिर क्या है? तमाम के तमाम, क्या जरूरत थी एक चीज अज़-ज़ुनूब से कवर हो गई? फिर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आई नीड टू मेक श्योर माय बंदे, या इबाद, माय पीपल अंडरस्टैंड कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं कैसा रहीम। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। गफूर क्या था? मग़फ़िरत करने वाले है ना। फिर रहीम भी बोलो कि मग़फ़िरत करने वाला, वो जो जस्टली मग़फ़िरत नहीं करता, वो रहमत से मग़फ़िरत करता है। आपके गुनाह आसमान जितने हो, उसके लिए कुछ नहीं है माफ करना, इट्स वेरी इजी फॉर हिम एंड हैविंग अ पर्पस। अब यहाँ पर तो हमारी लॉटरी, ऑनेस्टली यहाँ लॉटरी, हम मुसलमान है ना। ये क्या है? ये ऑक्सफोर्ड की स्टडी है, ये मौलाना की स्टडी नहीं, ऑक्सफोर्ड की स्टडी कह रहे हैं हैविंग अ पर्पस, एंड दिस इज वेयर दे गेट स्टक द मोस्ट, इसलिए ये लोग आखिर में रखते हैं। हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट ही है कि वी नीड टू हैव अ पर्पस इन लाइफ, वी नीड टू हैव अ मोटिवेशन, और हमारा पर्पस हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारी ब्लेसिंग। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। देखिए इसमें भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है। पहले आ गया आई डिड नॉट क्रिएट, यानी कि नफी आई है ना पहले, फिर आया इल्ला, इल्ला लियअबुदून। ये ग्रामेटिकल, इसमें एक और डीप मीनिंग, ग्रामेटिकल उसूल है कि जब माँ के बाद इल्ला आएगा ना, नफी के बाद एक्सेप्शन आएगी, वो आती है डेफिनेशन में। क्या है? हद बंदी। क्या है? हर चीज इसके अंदर है, देयर इज नथिंग दैट कैन कम इनसाइड इट, देयर इज नथिंग दैट कैन गो आउटसाइड ऑफ इट। वहाँ खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन की क्रिएशन का एक पर्पस और एक पर्पस ओनली, देयर इज नन अदर, लियअबुदून, इबादत। अब जो मैं बात कर रहा था ना, इबादत सिर्फ ये नहीं है कि हम नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें, दिस इज नॉट, दिस इज, ये मैं कहता हूँ 30%, 30% of deen, 60% of deen is हुकूकुल इबाद। आप किस तरह लोगों से बात कर रहे हैं? अगर आप अच्छे अखलाक के बारे में बशारतें सुन लेना,
मैं कहता हूँ आप इतने अच्छे इंसान बन जाए कल से कि आप किसी को तकलीफ ना दें कि आप शायद किसी बेसिस की जन्नत में चले जाए। ये अच्छे इखलास की बरकत है। क्या ये हमारी इबादत की डेफिनेशन में आता है? हमारी फाइनेंशियल डीलिंग हमारी इबादत की डेफिनेशन में आती है? हमारी इंटरेक्शन विद ईच अदर इबादत की डेफिनेशन में आती है? लेकिन इट शुड बी राइट। इस्लाम इज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ। इस्लाम इज नॉट जस्ट नमाज एंड रोजा। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। लिया बुद्धू ने बहुत डीप सीटेड, अगर आप सूरत है उसमें है वइबादुर रहमान लजीना यमशूना अलल अर्ज़, ये इधर से लेकर तकरीबन 10 आए थे, 10-12 आए थे पूरी एक सूरत के एंड तक। उसमें इबादुर रहमान को डिस्क्राइब किया है। उसमें सिर्फ एक आयत है जो कहती है उनकी नमाज, सिर्फ बाकी सारी आयतें हुकूक से। वो पढ़ें, वो समझें अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। स्ट्रेस अबाउट इट, सिर्फ असाइनमेंट नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने आपको 1.5 महीना दिया ना, तो 1 महीना इसलिए दिया था कि इसके बारे में सोचें, 2 हफ्ते में असाइनमेंट कर लें। दैट वाज द पर्पस ऑफ इट। जो आपके पास टाइम आगे से बच रहा है फ्रॉम योर असाइनमेंट, असाइनमेंट जरूरी है, वालिदैन के साथ टाइम लगाना जरूरी है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने अपना वक्त निकाल के आपने ये तो सोचना है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, आपके पास पर्पस दिया हुआ है। अब क्या है, वो लोग क्या कहते हैं, पीटर ड्रकर है, वॉल्ट बेनेस है, साइमन सिनेक, एंथनी वॉलिस, वो लोग क्या कहते हैं, भाई पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? आप सोचें आप डेथ बेड पे हैं, दिस लिटरली व्हाट दिस है, आप सोचें आप डेथ बेड पे हैं और आपकी स्किल्स आपकी गोस्ट बन के आपके सामने आती है। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके स्टार्टअप्स, आपकी आपकी जो है बहुत चीज़ें हो सकती हैं, आपकी मीडिया आर्ट्स की एक्सपर्टीज हो सकती है, वो सब आपके सामने आ रही गोश्त बन के। और वो आपसे पूछिए क्या तुमने किसी को सिखाई ये चीज़, या तुम मुझे अपने साथ दफन कर रहे हो, हैव यू बेनिफिटेड एनीबॉडी एल्स फ्रॉम दीस स्किल्स दैट यू हैव। ये उनको इतने शैलो तरीकों पे जाना पड़ता है, हालांकि वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है कि लियाबुदून इज सच ए डीप सीटेड डीप मीनिंग वर्ड, अगर आपको समझेंगे ना इसके अंदर ये सब चीज आती है। आपने किसको क्या बेनिफिट पहुंचाया, आपने अपने वक्त के साथ क्या बेनिफिट किया, आपने अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल किया, आपने अपनी रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया, अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल किया, एवरीथिंग इज इन इट। सवाल है ना ये, तो 5 सवाल जो होंगे उसमें शामिल है ना, वक्त को कैसे इस्तेमाल किया, पैसे को कैसे इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया। दिस आर ऑल क्वेश्चंस दैट यू कैन बी आस्क्ड, हैव यू थॉट अबाउट इट। क्या आपके पास वो जवाब है, क्या आप क्या देंगे? ये भी सोच रहे हैं कि हमें ये जवाब देने पड़ेंगे, ये नहीं सोच रहे कि ये जवाब कहाँ देने पड़ेंगे। अगर डेथ बेड से एक आगे स्टेप चले जाते हैं कि कोई और उनसे पूछने वाला है जो उनका खालिक है, तो उनके पास जवाब मिल जाता है कि इस्लाम, लेकिन नहीं जा रहा। अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। मोहर क्यों लगाई है? गुनाहों की वजह से, ना सोचने की वजह से, स्टबर्न होने की वजह से। लेकिन हमारे पास इसका आंसर है, तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। और उसके बाद बस ये है, लास्ट टाइम मैं शेयर भी कर दूंगा, ये दुआ है, ये हमें आनी चाहिए। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउज़ुल जद्दी मिनकल जद्द, कि जो अल्लाह ताला ने मेरे लिख दिया है वो कोई मुझसे रोक नहीं सकता, जो अल्लाह ताला ने मुझसे रोक लिया वो कोई मुझे दे नहीं सकता। स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट इट, स्टॉप स्ट्रेसिंग। फिक्र नहीं करनी है यार, कल की फिक्र छोड़ दो, जिंदगी आसान हो जाए। परसों की फिक्र करो, आखिरत की, दुनिया की फिक्र छोड़ो। दूसरी एक है, उसकी अरबी आप देखिएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्र व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। ये आप सर्च करेंगे, अगर आप इसका ट्रांसलेशन सर्च करेंगे आपको अरबी मिल जाएगी। मुझे सिर्फ इमेजेस मिल रही थी इसलिए मैंने कॉपी नहीं की थी सुबह। इसमें क्या है, अल्लाह ताला के नबी ने ये दुआ सिखाई डायरेक्टली। उनको पता है आपका और हमारा मसला आज क्या है। I take refuge, oh Allah, I take refuge in you from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, in the burden of death from being overpowered and from being overpowered by men. It's a very comprehensive dua. इसमें जो 15 साल से लेकर 50, 60, 70 साल के लोग तमाम आ गए। Everybody is included in this. मैं 1 घंटे में नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने एक जुमले में ही बता दिया कि जिसको ये मसला है वो उसको हल कर। And hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah Ta'ala is enough for me. You need to
plant this in your heart. You need to, और इसका तरीका क्या है? Keep reciting this dua, हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह. When you say that, अल्लाह ताला आपके लिए काफी है for everything. और ये एक सोशल एंजाइटी मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन बहुत लोगों को एंजाइटी सोशल इंटरेक्शंस की होती है, रिलेशनशिप्स की होती है. उसमें ये बहुत होता है कि यार मैं कैसा दिखता हूँ लोगों के सामने. इमेज कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर ऑफ स्ट्रेस. लेकिन हमारा टॉपिक नहीं था आज का, इसलिए आई डिड नॉट एड्रेस इट. लेकिन उसकी एक दुआ मैंने लिखी है. दुआ जानी शुक्र मुजानी सबूर मुजानी भी आयुनी सगीर फी आईनी सगीर व फी आयुन नास कबीरा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल दुआ. अल्लाह ताला मुझे शाकिर और साबिर बना दे, ठीक है, और मुझे अपनी आंख में छोटा बना दे ताकि तकब्बुर ना, लेकिन दूसरों की आंख में बड़ा बना दे. दूसरों की आंख में बड़ा बना देगा ताकि they would have the best image for you, but you would not have that image, so you would be far from the perfect. Subhanallahu alazim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Jazakallah. So, because of the shortage of time, we have not taken questions for this session. Now, I would like to invite Director, College of Management Sciences, Dr. Adnan Anwar, to speak few words before distributing mementos. Assalamualaikum to students, faculty, and esteemed guests. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अलहम्द से हमारे पास अल-हिकमा से हमारे पास 3 लोग यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने आपसे बात की, अपना टाइम निकाला. ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी गुफ्तगू है क्योंकि ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं और हमारे पास स्कूल के इश्यूज भी आते हैं सिलसिले में काफ़ी. तीनों कैंपस साइट्स जो हमारी है वहाँ पे मोर लेस इक्वल नंबर पे इश्यूज आते हैं. उसमें स्ट्रेस से रिलेटेड है और कुछ उन टॉपिक से रिलेटेड है जो पहले यहाँ पे डिस्कस हुए. जनरली मैं ये देखता हूँ जो मेरे पास मैटर्स आते हैं उसमें ज़्यादा जो सफरिंग है वो ख़वातीन की साइड से है, क्योंकि जब ऐसे इश्यूज होते हैं और उसमें ब्रेकअप होता है तो ज़्यादा मसले मसाइल, इमोशनल डिस्ट्रेस. इसका मतलब ये नहीं कि मर्दों के इश्यूज नहीं है, लेकिन जो हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं हमसे डिस्कस करते हैं, तो उसमें ज़्यादा जो सफरिंग ज़्यादा है वो ख़वातीन की तरफ ज़्यादा नज़र आती है. तो सभी के लिए है ये सेशन और आई ओपनर भी है, और क्या सही है और क्या गलत है थोड़ी उसकी पहचान के लिए भी है. और हमारे पास जब फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है तभी हमें सही और गलत की पहचान होती है. और फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमारे लिए हमारा दीन है, हमारा मजहब है, इस्लाम है. और जब उसमें जो सच और सही और झूठ और गलत की पहचान दी गई है तो उसको देखते हुए ही अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो फिर स्ट्रेस में तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन टेंशन में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, तो टेंशन नहीं होनी चाहिए. वंस अगेन डॉक्टर अब्दुल्ला का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसको अरेंज किया, मैनेज किया. यहाँ की मैनेजमेंट का डॉक्टर सहर, मिस्टर उमैर, अदनान साहब और बाकी हजरात फैकल्टी, सबके लिए थैंक यू. एंड फाइनली वंस अगेन थैंक यू टू आवर एस्टीम्ड गेस्ट कि उन्होंने आके इम्पोर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू की. उम्मीद है कि वो आगे भी हमें टाइम देंगे इंशाल्लाह, और आके और भी स्टूडेंट ग्रुप से और फैकल्टी जो दूसरे कैंपस साइट लोकेशन पर हैं उधर भी गुफ्तगू करेंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Now I would like to request Dr. Adnan and Dr. Tariq to present these memento to our esteemed guests. First, Maulana Khizar, please.
Now my elder brother actually he is sitting here. Actually, he is not talking of this person. He has arranged all these lessons. appreciate the words Okay. if you allow me. As far as talking about the love, that the main takeaway was that you will understand the love after being married for at least 25 years. I'm sure. Okay, thank you so much for attending this session. I would like faculty to remain seated for just 5 minutes more, and I would like to request the students, you may leave the room, please. Thank you.